Assalamualaikum everyone. We are back here again. This match is going to be determining our one and only grand finalist that will be competing against the lower bracket finalists, of course. And on board right now here with me is none other than Ali Kate. Uh, Hi everyone, welcome to the stream. And yeah, I've been following this tournament as well, but आज मुझे थोड़ी बहुत opportunity भी मिल गई है to cast alongside Irvin, so we're gonna be enjoying some good Valorant. And both teams, they have good friends of mine, so I'll try to stay as unbiased as I can. But that's a yeah, thing. Yeah, we know all of these players, and we know we've been playing with them here and there. So definitely, yeah, थोड़ा it's a hard task, I would say, but we'll try our yeah, best. yeah, Split we'll try our is a best. map. Is personally my favorite though. I've been playing Cypher on this map for such a long time, and I just love this map. So we have a Vice on this one though. In comparison to there's no Sentinel from the other team. What do you think about that? Yeah, it's not something new that teams don't run a Sentinel on this map because the way they're designed is like they're running the double smoke. So on the defensive side, the Viper walls or the orbs, like they're gonna stall out a lot of time considering that they do the decay mechanic as we all know. So that kind of acts as a Sentinel utility, and yeah, pretty much their ideology will be to like deny information through the sightlines and like deprive information from the other team. Definitely, that is for sure. I mean, I think Viper is not a bad pick. I've not Yes, indeed, had. it's not. Yeah, definitely. Baki, that's Like, pretty. Yeah, go ahead. all right. Wait, that was party chat, right? That's party words. Yes, yes, that was. But Okay. Okay, but okay. anyway, but anyways, but anyways, yeah, we you did talk about the Wise on the other side that has been in the meta for a while now, and well, Yeah. it is becoming a very popular choice amongst like in front of Cypher and Killjoy because both those agents, they do have good utility, but Vice offers a different kind of playstyle to a lot of teams that with the flash, you could probably gain a certain information about a certain area that you couldn't Yep. necessarily That is for sure. You're with a totally Cypher right Killjoy. about that. Uh, I think we do have Yoru on from the attackers. I feel like Starcase on Yoru is like uh I've seen Yoru being played a lot on Split also, specifically with Sentinels. If I talk about their VCT matches, we've seen Zekin play on Yoru a lot. So I think that's a pretty good pick for this map, personally. Baki, they're pretty obvious. The standard stuff here we already have a timer just right Yeah, on towards. it's fine. But yeah, you were Yep. talking about the Yoru. But Yeah. Yoru, what makes Yoru tick, I think, is the way when he can teleport through like vice walls and stuff. And when he's in his ultimate, he can gather so many information, and off of that information, Breach and Tehu can just combo their utility, and even Omen can combo a flash as well. So it's just very Definitely. powerful in that sense. And plus, there's a lot of deceiving games that Yoru can play among in front of Yeah. the other team. So he can a good Yoru will definitely make a fool out of you. So watch out. Yeah, that is for sure. I mean, the fake flashes, the way you would utilize your TP and your clone and everything, that is for sure. I mean, if Starcase is very well known on how he could possibly play Yoru, then I think that's a pretty solid pick from the attackers. Age, Jet Indeed. and Raze is pretty common, like I've seen them all around on Split, specifically like as a Raze. That's being played for so long on Split. So yeah, it's a pretty common com except for the Vice. Obviously, it's been in the meta as you were saying. Baki, it's a pretty usual lineup from the defenders. Yeah, both But teams like there's gonna be a lot of disruptive plays from both sides because they've gone with like two different ideologies regarding the duelist. But it's just gonna come down to who can support their duelist the best. true, it all depends upon the way you're gonna basically smoke, and then obviously your initiator, how well of a role he's going to play for as being a support for your duelist for the entry. Well, here we are. Yeah, but because it's pretty scattered around.
all Yeah, the attackers. it's a very spread default here, but Staircase has already worked his way up towards the SRAM site. And Ackerman Ackerman, has the info because he's obviously made the sound there. So, yep, indeed. well, And we see Loki getting the first kill onto Hamzito, oh, followed up there we by go. Oreo. Already, we had HMI just kind of went back off. Oh, Starkis does get Ackerman there. Yeah, still the initial couple of kills going the way of V1 here, so at a man advantage now, but Catalyst have walked their way in towards this A side here. Frenzy very low, so it's gonna be a pretty difficult one for them to convert. And yeah, they are opting. I don't mind this call to maybe fight CT, but Zan is gonna There get we caught go. out with the knife. They get Zan there off there. He was not really expecting that there, so that's a good move there. Definitely they've got the spike planted. Oh no, it all depends on HMI right now, who's in a 1v3, and Oreo in the end gets him down. Not bad. Yeah. Not bad at the beginning, but it just did not really work out at the end, and our defenders finally get their pistol here. Well, Yeah, indeed. Their idea was completely correct. Like they did, they did want to fight CT, get a pick, and then go for the plant. But in the end, we did have Frenzy very low on HP, so that still kind of put them at a disadvantage in terms of the post plant. And yeah, we won just very cleanly pulling that retake off. So the pistol goes the way of team V1 now. And now they're going to be on a buy. They've invested a couple outlaws, one outlaw here, and look a at that. vandal as Oreo well. peeking in Oh. with that outlaw, and he gets down Starcase already. And he's going for more. Yeah, he is gonna go for more here. That nitty is going to delay things for Catalyst here. Ooh, Ramzito lands a very nice shot. Oh, he gets down Oreo there. Wait, he almost gets slow there. He is pretty heavily damaged. Look at And Ackerman. Ackerman has creeped his way towards that smoke. But They're not there. Good for them, honestly. Because if they would have made a move towards that box, they would have probably died altogether there and, get a pretty hefty damage. But, well, here we are. Going through the sewers all the way towards the A side. yeah, they've now regrouped with Knight here. They're gonna walk up, and this is the strength of the Viper here. Like you are denying so much information from the defenders through that wall, and as soon as that wall goes down, Zen gets caught out here. Out of charges. Knight is pretty low making there. their way now. Spike gonna go down now. Loki. They're just gonna do this hold off pretty well because this is a very winnable round for them. Come on, oh, never mind. Loki able to get down one there. Can he manage another? He has got the Vandal, so there's a lot of stuff he can do there. That's all bunched up backside here. They're gonna have to pull off a miracle. Knight. 2v2. This is Knight knows about playing in Ackerman. the smoke. Ackerman Onto in the the spike. smoke. He's not defusing, but they think. And Ackerman. Get off my back. Ackerman. He can make this work, but he's not looking the right direction. And Frenzy with that good timing. I would definitely say this is the luck factor here because he had a stinger in his hand, by the way. So if he was looking his way exactly, I think that was pretty, that was pretty much a done deal, yeah. Yeah, but, well, it seems like the luck was in Frenzy's way here. And, well, they make it to a tie here, a 1-1. And we have a P10 Another already. P10. We've been seeing so many P10s since Yeah, this we tournament. love to see that. I mean, it is Pakistan, so it is pretty welcome to expected. Pakistan. This is just the norm here. Like no turn. There's never gonna be a tournament that there's no P10s or whatever, because For sure, that is definitely there. Yeah. yeah, it's gonna be this way every time. But now this gives us something to talk about that. V1 did get the pistol, and then Catalyst answer back with the anti-eco from them. Gonna force V1 on sheriffs only here. Let's see if V1 would maybe want to buy up.
I was kind of totally expecting our defenders to get that round, but उन्होंने कोई खास like इतना buy किया हुआ नहीं था. अगर Yeah, if you look at that factor, you know, like we just had a couple outlaw. I guess a stringer. That's nothing much. Bulldog as well. I feel like I'm not really sure. I don't true, remember, true. but in this sense, if Yeah, I talk about this round, then I think that the attackers have it pretty easily because. I mean that's like 5 rifles against one, like four sheriffs and a shotgun. So I think that's pretty much easy for them, and they got this one. all But right. We well, got the call for the R now. there we go. We are getting into Um, this. Once again, now we're gonna get back into the game. Team Catalyst now on rifles. Meanwhile, Hey, Team we Vision have 1 them on a bit sheriffs. scattered around here. We have Zero towards the mid. Yeah, at Okay, this they're point, kind of holding off. V1 are gonna be like favored in those close range fights. But yeah, Team Catalyst still doing a very decent job holding this very passive default, and like well, anytime now they've got to take space at least some part of the map. But they do know that one of the opponents is actually kind of at the mid side there. You know, it's Oreo obviously, but look at him. He's going in the front. Just walking out, and now Stark is gonna give Stark him is some support here. Look at that. He gets Flo down. Not bad. I mean, it was Oreo that was supposed to die there, but well, Flo just loses his life so mid now they've this. got the info on 2 people. So if off of those kills, V1 decide to maybe stack B, a pivot towards A would have been good, but never mind. Nice with that shorty, bruh. Oh, Ooh, nice shot from Oreo and Ackerman as well. Some trades coming in now. It is a 3v2 they've in got the favor of spike. Catalyst. Yeah, Definitely. I mean, we do have Ackerman with the Vandal, so I don't think that's so far from winnable if they get the pick somehow. But Zan now look at that. making his way towards the heaven. He Zan needs to falls down. choose his fights Ooh, they very all are going wisely. towards the One spawn. enemy remaining. There we go. Frenzy gets one pick down there. It's just Ackerman left behind. Okay, no way. He gets one from the aftershock, and now it's a 1v2, but Hamzito gets him down. Okay, well, Hamzito was just like pretty low, so it was like 5 HP. It was just one body shot, but somehow he just had fast reflexes. He gets Ackerman down, and still 1v2 now. Yeah, Well, defenders do get the Vandals now, so let's see what differences we're gonna see with the fact that it's pretty balanced now. So 5 yeah. This Vandals is gonna be versus the 5 first. Vandals. Yeah, this is the Proper first gun round, round of the yeah. game, so we'll kind of get an idea as to who has kind of an advantage over the other team, who has the better protocols. Yeah, we see V1 stacking and very eager to take this B lobby side here. Okay, that was kind of a sentinel sort of a lineup that I've been seeing. I've seen them do in VCT sort of, but not much that they did from it. But they did get the control of mid here. I mean, that's Flo there. He doesn't get detected. That they're going in for it. The Starcase all the way jumped up here. Oh, he goes back. He goes back. They're using the sewers to go down towards the A site here. What are There's they only planning? Zan anchoring Knight. towards the side at A. Knight was already here at the A side. He was kind of lurking off. Now the team has joined him. So I think they will be executing A. And it's pretty easy. Oh, never mind. Zan. A. Zan gets down HMI. Already at a disadvantage. One of their initiators is down. They got Work their free, way but to the look side. at He's gonna Remaining. peek out and get Oh, 4 no. kills. Zan with a huge he round did- there. He did get Are they traded gonna- out there. I was trying to go Are at they gonna him, but... give him the ace? there you go. Oh, Ackerman. he died. Okay, my bad. I didn't even see. Yeah, I was kind of going towards the Zen because I wanted to see his action, but he was just dead before I could actually Yeah. go to his cam, you know. But well, either way, we do know that he did get that 3K. I don't know what he took the opportunity of the fact that when he was breaking the flash, he peeked in randomly and he just, just got him off there. So Yeah, you the know, timing was just in favor of him, definitely there. and yeah, it was a very huge round for Zan, getting 4 kills, tying things up now. Oh wait, into the 5th round we go, and V1 still wanting to fight towards the B main side, and already Oh. Hamzito falling down from the side of Catalyst. So, well,
One smokes player lost for Catalyst. Now they only have the Viper to rely on. And again, in the usual position, is he gonna get something off there this time as well? Going for jump Okay, shots here. he kind of got the damage of it, but okay, Flash. He changed. Oh my goodness, Oreo on the other hand is just unstoppable. He gets 2 down. It's a 5v3 now, so it seems like it's pretty going towards the defenders once again, because like you're already down on the manpower. And look at this. So, Catalysts are gonna run into a crossfire here set up by V1. yep. The smoke is not looking good for Knight, honestly, because Omen is right on his face. The flash Okay. from Catalyst. Oh, Spike Loki. down B. He gets traded off there, but like, and in the Oreo. end, Oreo. Kind of Oreo playing with gets his food frenzied there. down. Yep. Frenzy was full stun there, and Oreo just It was definitely playing Loki's with him. positioning that they just did not really expect. He was right outside the smoke, like barely. You wouldn't even expect him. He was like right at the very, very corner when he got out the smoke. And he got out the smoke to get the other person. He just kind of took advantage of that and he got 2 down. And then we already had Mr. Oreo who was at the 3k there, and then obviously he gets the frenzy at the end. So like definitely defenders just did an incredible job here. Again, packed outside the A main. They're playing so slow. And look, we finally have Oreo on the operator, so that's a really a thing there. Okay, we have Starcase in the ult. Let's go see his ult there. Slow gets down Knight. Oh, ooh, Starcase, he just comes back. I thought he was gonna go in for that, but he does not. yeah. Catalyst did try Then the classic land, approach okay. Standing. Spike Just- down A. with the Euro reach Starcase. Teho, but He gets it has one. not worked out. He does the TP. Oh, and Oreo there with the operator. His reflexes are really good, yeah. Come on, like I've seen him like quite improve since like obviously the tournaments I've been watching and stuff. He's been really improving himself, proving himself to be the carrier of his team. So that's good for him. But seems like Indeed. Vision 1 is getting that flow back. The momentum is building up for them. And it seems like attackers are in a bad trouble now. Like, again, they're on their save round. Once again with the Sheriff and a couple Stingers. And Oreo. Oreo with the op here There. is not a wise thing to do. No, it's the most expected position that he's been sitting on, but this for some reason are just kind of giving in those picks for Oreo by themselves. I'm not really sure why they're doing that. Zero probably gonna go for that flash. He goes in, he knows Loki is there, he knows someone is there. Oh, he gets a pretty heavy ding. What is going on? So there was a whiff. Okay, Frenzy able to trade that off there. He gets flow. Loki's pretty low, so oh well. Loki somehow gets Frenzy down. As just last live on Night, he's with the Stinger in heaven, just waiting to get a cheeky kill, but let's see if he'll be able to get one. Zan very And nearly nice. gets taken down. Tried his best there, but Zan was there with the Lando. He gets him down. Defenders 3rd consecutive round in a row, so hard to break off this momentum, specifically with the fact that they are kind of giving off those picks to Oreo themselves. You know, like Yeah, they know Oreo's specific position. He constantly plays mid, like, but they just go in for that. Maybe they're yeah, expecting I'm him to surprised switch. that when Catalyst is on an eco, they kind of rush into things, and when they do have the superior Guns. weaponry, Yeah, they they do don't. play a lot of slow. Yeah, I think that's the thing. They need to kind of fasten up And Oreo. once again with the off As we're Oreo, talking, we have Oreo getting that operator pick already. Zan is takes not that. gonna get overwhelmed by that Teho drone. Alright. He's gonna get one HMI and gonna fall back. HMI does that really heavy spam there. It kind of gives Zan a very low HP there, so I guess that counts for something. Loki on the top of the box. I think he's not gonna check. He's not going to check that. There are I 3 hope they players check. here. I hope And I they think check, Zen is gonna 'cause go for a jump spot they're- here, but they're not he checking. is not. Whoa, he went in for the aim discipline, but it did not work out. Yeah, that's gonna cost
maybe we won Yeah, definitely. I mean, unless Ammunition. unless we even do pull this retake off here. Ooh. No, not gonna connect with the raise out here. Heavy. That is just. That was a pretty hefty blow there for the defenders. It's Oh, just Oreo with the knife, but he doesn't get much Yeah, I off of think it. that round is Oh, no. is lost because of Loki. Loki there a bit. I mean, he did have a good approach there. Like Okay, the way he approached the round. Yeah. I really need to talk about why the hell would frenzy check that when your teammate just walked past there. 'Cause, Yeah, like, that is pretty funny because like he didn't trust his teammate to. Did you even clear that left angle? He's like, oh, okay, I'm gonna do it myself now. And that actually ends up winning them the round there. Yep, Because that if goes Loki definitely. did pull the trigger there, Ooh, that round was push gonna go the way of V1. Okay, that was just a bit of utility dumps. I thought they were gonna go in for that and kind of push them off. They've got all the way towards the B main though, but no one's coming here. It seems they're going in for the A side. Oh, Ackerman gets on Ackerman. Sparkcase. The AWP Oreo. still getting value This for guy. Vision You 1. need to take him down. Hamzito gets down Loki. Flow probably. Okay, he does a pretty hefty damage to Hamzito, but Hamzito somehow still manages to get him there. Shadows Okay, traveling. they are 3v3 locked in. now. Oh, look at Oreo. Oreo. Look at Oreo. Very low with the AWP. The Zito flick lands of a that very fast flick flick there. onto Oreo. Ackerman, all depends on Ackerman right now. It's a 1v2, so I mean HMI, there's a huge possibility he could like clutch this, but okay, the aftershock here. A double peek here, he couldn't have done much because Ackerman was also facing out that angle, so in the end he gets that 4K down, so well, good for him because like that was a pretty good fix that he got at the end of the day, because like there was a huge possibility that the attackers were actually gonna take that round, because you know, specifically after the picks that Hamzito got, the 2K in the B main, Yes. I almost thought they were gonna get it, and obviously he kind of TP'd and got Oreo down as well, so unfortunate. It was just Ackerman all alone with those stuns and stuff. He just kind of took down 90% of that team, kind of giving the Yeah, defenders another yeah, round. that was great util invested from Ackerman there, and yeah, it pays off. Wins them the round, and the timeout being called for the side of Catalyst now. They're going to be discussing how they want to approach this game moving forwards. And what I would like to see from them now to approach their ecos with a bit more thought process, because they've been kind of rushing into their ecos a lot and like been very hesitant. Like they do speed up things a lot and then don't even invest any util to clear out any, like we've I would seen agree on Oreo. that. Yep. Yeah, we've seen Yep. Oreo on the off for so long, and like they haven't been able to identify. Like first you have to identify where the op is, and which has been towards that mid side, and then you have to kind of invest util as well. It doesn't matter if you're on guns or not. Like you still have to invest a bit to clear things out. Definitely. But yeah, We have the yeah. opera coming towards the A this time, so well, they're not going in for the A this time, but they are probably gonna go for B. But wait, yep, they have the spike at the B, so most probably kind of they're not gonna go in for that, because obviously, you know, there's like 2 people there on the B side. Wait, defenders have already like kind of rotated all the way towards the B, so it's a pretty stacked side. It will be a good decision if they don't go there, because it won't go well for them. But Yes. on the other hand, midway a bit of there, we have Viper, Knight. Oh lord, And again, again. V1 Um, Oreo reigning supreme with the op towards that mid side. He's He not is been he's not been back. challenged that much in that angle, and Zito I think might get caught out, and he does indeed by And it V1 does. Loki. Okay, they've come Now- all the way towards the B main, getting that orb and kind of back off. And the team is going towards A. And I mean, it's yeah, just and look who Vice there. and look who it is anchoring that site. It's now Zan joined by Ackerman there. So yep, it is. Oh my god, Spike down A. Ackerman with that. Oh, Going that for was a the bad one. ADS there. One That was a enemy. bad Zan, one. He tried, but Zen for the rescue. Gets that 2K down. He tried for that ADS thing where it kind of yeah, went he bad. tried to be cool a bit. He
kind of like he gave so much time for the sheriff to actually take him down. So that was All bad. right, now But we have 5 ults on the side of Team Catalyst, so they could still go for that Yoru play again. Like Ozefly could go for the Yoru ult, and then whoever he sees, the Catalyst members, they can stun and maybe throw their salvos as well to clear out anyone playing in those cubby angles. They're gonna hold a pretty default here. Okay, already okay, in towards that okay, mailroom well, side. oh, Starkist is pretty very low. low, bro. He caught so much damage and they know that he's there. So I think this is it for him specifically. What is he gonna do with that? Like that's such a low HP. He's kind of almost not there. He's non-existent right now. Well, Yeah, it's literally 125. one H. 26. Okay, Literally. 26. Let's just count that. 26 HP. Sure. Okay, 20. Sure, As if 26 that, HP. yeah, as if that's gonna make any difference. It's just one body shot anyway. So, well, Yeah. we main की तरफ approach कर रहे हैं और Oreo. Look, who's their guest? Waiting for it. Let me just go on Oreo here. Okay, he gets it. Finally, some progress there. Oh, Loki ka Loki gonna follow up with the flash. trade as well as Wait, Zen what? there. Spike Marcus? down B. Oh my lord. Interestingly, he kind of just guesses that Raze was sitting in that corner there and kind of gets low there. But Loki, oh lord, Loki gets Starkist down and defenders once again. So many Last consecutive round rounds. before I the think it's switch. pretty much it for the defenders here. I think it all depends on how they play their attacks. So it's a pretty easy win in general if they continue playing obviously on the attack as well, because it depends, because Uh, maybe there's a huge possibility maybe our attackers are much better at defense. Who knows no, about that, you know? we've seen a split historically be a kind of a defensive sided map, so Yep, oh, exactly. we'll have to see how Catalyst perform when they are on that defensive side. But Okay, we have right now, I Oreo. think they're gonna be hoping to maximize getting this round, making it an 8-4 here already. Starkist with the Yoru ult, getting all that information, and an immediate counter ult from the side of V1 there. They're gonna immediately put an end to Catalyst's approach there. Starkist just keeps dying at the beginning. It's not doing much for his team at this point, because it's just he's going very unlucky with all those plays that he's been doing. He gets the ult down, Yeah, he gets it's some very info, but then he dies at the end. Not much you were doing. Look at Ackerman coming in the smoke through the with that damn shorty. I think he's probably gonna get HMI there. HMI takes 2-3 steps forward there. Okay, nah, he's not. They're kind of turning off him. Zero caught up in the wall. Oh, we have the wall. We have the alt Ackerman. Look at Ackerman. Ackerman. fully He flashed gets there. HMI. They did get one kill. Or you're now letting that Oh, look at off that. sing once Hamzito. again, but Hamzito is flanked all the way here. He is gonna get caught out by Yo. Oreo. 30 seconds left. Again, this man. Out of charges. Oh lord, 9-3. What a good round though. Like it was fun to watch, obviously, Switching because like sides. we saw we were- a lot of potential from both the sides. There was a huge possibility for anyone to win that, but like in the end, our team Vision One just Defenders. had better defense there. Yeah. They kind of pushed them off, even though there was ult. But Akram's position in the back kind of gave it off in the end. You know, he did not get ulted obviously, so he was hiding in that ratty position, and he gets them down somehow there. So, well, unlucky for them. It all depends on what they do now, because they've got the defense. So hopefully there's something different this time, because like if you compare the KDAs there, that's a huge difference. Like look at that. Indeed. We were talking about the Yoru, like he's in such a heavy responsibility role because everything relies on him getting the first kill off of the util, and well, Yeah. if he doesn't manage to get that kill, Yeah, is he's been it dying just pretty make early off in the game, so not much frenzy. Ooh, he gets down, Oreo. Already a pick from the. Oh, damn, he gets another one. Star case, finally, he gets Zen down. Okay, that was a pretty fast picks that we saw. Star case Bit of a gets another. bogey block. Okay, Ackerman trades him off. It all depends on Ackerman now. What is he gonna do? He's got the ghost, he's got the 70 HP and the spike. If he gets 1-1 pick somehow, there's a huge possibility for this player to win, because he's really, we've seen Ackerman play
pretty well off there. Frenzy facing him right off, gives him a pretty hefty damage. I think that's pretty much unwinnable at this point because of the HP difference now. Okay, he's walking up all the way up, but he's coming back down. Frenzy's probably gonna face him off. They know their position now. HMI Yeah, come walking on. up towards Maybe him. lurking around. I think he should have Stun done there, that a bit. an aftershock. Frenzy got him there. Ackerman is down now. Okay, not bad. I mean, if you are looking to make a comeback, it's necessary that you actually win your pistol and your buy round. I mean, I've seen people play. Yeah. Winning the pistol there was very important for Team Catalyst if they want any chance of coming back into this game, and off of a very good round from Frenzy and Starcase, they're getting the initial couple of kills there and earning them their 4th one. They're gonna buy up in this one and hopefully kind of start to mount up a comeback. As you see, we won only on Classics, just a share onto Flow. Okay, we have Zero there. Oh, that is a bad timing to disconnect. Oh no, look at that. He's disconnected there. I think the Zan's gonna gun. get. Zan just gets the first kill. Oh yeah, he does. Help. Look at them. They're kind of walking off towards the spawn here. They've got the control of that. So like Knight is there, gonna face them off, but he gets one down. Doki there. He trades him off. Starcase is there with a Phantom, so he could do a lot of damage to them. But it's a 2v4. I feel like it probably will go towards the attackers, but I can't say much considering the gun difference, obviously. Firefly going for the flash kill, getting one. Oh no, I was expecting more, but Ackerman, he gets Starcase down. It's a 3v1. All eyes on Frenzy. What is this guy, this man gonna do? He stopped fragging for there as well, but oh, Ackerman, he gets the first pick down. And Hamzito is down there, so they're going towards the sewers, probably making their way towards the mid. HMI awaiting them there just as bit. Is he gonna get some picks down here or is he gonna die? He has a stinger in his hand, so he's right in the corner. Oh, the timing! Oh, but not much damage he could do there, but imagine if they hadn't seen, bro. That was such a bad. That would have been a big scene, a big thing there, but unfortunately, confused there. But Starcase coming alive now. We're gonna get traded by Ackerman. As we were talking about Starcase, the man does get the 2 picks. Frenzy hiding in that corner. He gets one down. Oh, he tried with the other one, but Loki gets him down first. Yeah, too many positions to cover. Lord, I really need to talk about that position, that thing we saw at mid. Oh god. HMI could have very well won the round there. Oh, but and there was kind of a What spidey sense that triggered for Oreo there. Like he just turned around and for some reason, he did turn around. Yeah, that could have been a bit of instincts there kicking in. Let's have some fun. And yeah, it could have been very bad for V1 there. Finally, they've got some guns on the other hand, but not much. Again, their economy is in such a bad condition. There's nothing much they can do at this point because Knight को जो है ना जिस तरह push होने वाला है ना जो अभी Knight को, look at that. Loki with the TP. Oreo gets down Knight, not bad, and they're kind of TPing. Loki TPing towards the heaven here. They've got the side control. They've got the spawn control. CT as well. Oh no, the CT there. There we go. Oh, bro. Okay, good Frenzy trades him off there. He's in a 1v3 with Ackerman pretty low, but Zan facing him off right to the. Ooh, that was a good flick on Zan there. Ackerman is low. If he somehow manages to get one pick. But Loki is flanking around the CT side. Oh so no, the Loki. I don't think Frenzy is gonna expect that. Oh no, the timing. There we go. He's walked up and Loki gets him down. Out. And we approach towards our match point for Vision 1. Point. Indeed, now like Team Catalyst, they've had very close rounds. Like it's not been like they've been completely dominated. There's just not been able to close things out.
at the crucial Yeah, timings there. definitely. Like a lot of timings happened in mid. We've seen them not really challenge the op of Oreo at mid as well. Like he got a lot of free rounds just because of that. Yep. And like, okay, kind of nice This towards the mid here. What? Get out of Hello? barely a peek for Oreo, and he's gonna take it. I kind of took the good opportunity there. He kind of smoked off, but he He saw him expects before one the more smoke as went off, well. and Zito. Player Loki, standing. Loki gets another one, and there you go. Attackers win. Ackerman finish it off with a 13-4 here for Vision 1. Congratulations to them for getting that first map, obviously, in their part. So now it's very necessary for Catalyst to get the second one because that might put them in a huge trouble if they Indeed. want to keep staying here, you know, make a Indeed. position for themselves in the grand finals. Well, Yeah, and okay, it they're looks going like in everyone directly. is just everyone's just ready to go again, and we're gonna get Yeah, that this is what guys stop like. of Give the us a map. break. Let me ask it.
All right, everyone, we are back with the second map now of this best of three between Vision 1 and Catalyst. First map has gone the way of Team Vision 1. It was split, and the scoreline was 13 to 4. Now, on match point is Vision 1. They're going to be one map away from closing things out here. Catalyst in a must-win position now to win out this map if they want any chance of surviving in this game still. And a look now at the comms here. We see Wele coming out from Team Vision 1. It is a very new addition to this duelist roster, and well, it has its own strengths and weaknesses, but okay, they are actually going for a double duelist with the neon. I think we might be getting a restart, it seems. The lobby spamming Arfid. Oh, there we go. All right, we're again. Okay. Lotus, and if Team Catalyst want to maintain their space, maybe possibly go into the grand finals, they need to win this map because best of three here. And we've seen Team Vision One get the first map down pretty with a huge gap though. So it wasn't just like it was pretty one sided at at the end of the game. So now this is a huge challenge for Team Catalyst if they you know wanna stay in the obviously in this upper brackets there. Indeed, and yeah, now we see the agent select for Lotus now, and there is gonna be a double duelist comp from the side of Vision One. They're gonna run Vele and Neon. I don't think I've seen this before, so
It's gonna be something new for me to witness. A And Vele, but yeah, really I've along with the usually just neon seen Vele. Yeah, I've just usually seen Vele with like a double initiator on Lotus, but I've not seen double duelist specifically, as we've seen Vele and Neon, as you were saying. So that is in definitely a bit difference. And Loki indeed. on Clove, so that's also a Yeah, bit like when you're playing Clove, I think you're kind of in a very you're in a position that you can take aggressive fights and get away with that is the pick definitely me as up as well. well from Clove. Like Yeah, it that's a gives you kind of the a speed duelist. boost. Yeah, that's kind of a duelist sort of role that she has. A bit, not that much, but a bit of on and off there. And well, pretty obvious comp from the attackers is the Tejo and the Breach that's been like running crazy, on Lotus and the Vice. Obviously, we've seen Tejo kind of completely off replace Fade. I was seeing a lot of Fade on this map before Tejo came off, but now we barely see her anymore, and then it's just the Yeah, race. it's kind of Yeah, sad to see because I was a very keen player of Fate, so kind of hurts to see well, an initiator like yeah. that getting off meta. But some teams do still play it, but well, they cannot disregard the amount of utility that Teo has to offer. I think they've got the flash of the Vice down. It was right off on towards that mountainous area, but I think maybe I saw it wrong. I'm not really sure. We have Knight on the lurk, and rest of them. Oh my lord, they've taken the rebel control. It's kind of again, Team Catalyst is doing this, scattering thing. They did Yeah. that in the last map as well. Uh, There's only Zan, I think it is. Yeah, yeah, it is Zan still anchoring towards that A site there we here go. with the whole Drone. setup. There's a wall. There's Vice set up on the. Oh my god! I think it's a bad mistake to not check tree first. It was just kind They of. are gonna pop the tree now, and a lot of util gonna be Yeah. invested. Ackerman gonna throw a stun maybe to support Zen. Okay, Zen He's gonna get. probably could have gotten that one down, but he just dies off first. Ackerman with that HMI pick and Starcase Flow. What is going on? It's just trades after trade. Ackerman with the 3K. This guy is popping off right now on the pistol. Zero gets one down. Ackerman, guess is that an ace? Oh no, Knight on the lurk, but look, he gets him down. Okay, we need to talk about the fact that Nice lurk was pretty good. But in Indeed. the end, Loki was there to kind of get him down. अगर थोड़ा सा, अगर he could have backed off, maybe Knight थोड़ा एक pick लेकर he could have backed off. He had enough time, like 1v1 में थोड़ा आ जाता. So Loki just instantly took advantage of that. He just kind of went in for that, and he at the end obviously got him. So Yeah, it was like indeed. one pick for And another. Trades that we saw constantly, and then Ackerman out of nowhere he got that 4K, which we have seen him do a lot of times. And well, this time the team's going for C here. Oh, Oreo. um, This is literally like split. You remember if you yeah, remember Outlaw on the jet on the mid on the second round exactly. It was like same sort of thing here. and now I think we'll be Zan and seeing that Flo a lot here here. in an up down here is gonna get Double peak. very It tricky is to navigate towards this. okay. The utils are good. There's okay. We have Zero that he's entered all the way. He gets Flow down there from that tiny head that he saw of him. And oh my god, Loki there with an outlaw. Loki with the ghost star case on Ackerman. It all falls on the star case with the sheriff and 65 HP against an outlaw. And Oreo is pretty, health up. He's at 125 against a 65 and a sheriff, obviously. So I think this is moment for Starcase to shine. Okay, he got the bulldog. Uh, The spike is in He's a low. very He's kind of low on HP, so like any shot that Oreo connects is gonna net him the round win here. But he's first of all gonna clear out a couple of corners here, the time and is I think ticking he does off. want to Oh, the fight towards the timing, CT side. the Oreo. timing. is- Oh god. Oh my lord. The Starcase timing was really awful. I mean, we saw Starcase approaching towards Oreo, who was looking at a different angle, and then when Starcase went in, but he just kind of Yeah, it was kind of a half-hearted clear from Starkist there. Like he didn't kind of fully commit to that CT fight,
And like, I mean, at that point, he could have been anywhere. Like, Oreo could have been anywhere, and like, kind of hesitant to make a decision there in the end from Starkis. Spike drop. As we see now, Team Catalyst holding a default here. Knight getting the first kill onto Flo, and Starkis follows up with a kill onto Zen. So already a man advantage for the side of Catalyst. HMI gonna send out a stealth drone to clear out this rubble area. Now, Catalyst now cut noise, gonna regroup with the rest of the squad here towards the seaside. Knight, and all of them have decided to kind of regroup here. I'm curious why they didn't. They could have left one as an insert there, but Ackerman already down to very low HP, and that is gonna be the cue for Catalyst to speed things up. On the CT side, Ackerman is very low. Live munition. And yeah, now the plant coming in for Team Catalyst Spike planted. in the post plant positions. Gonna be a tall order for V1 to conquer here. Loki on the waterfall and 2 players on that CT side. And I do hear Loki there with the bucket, getting 1 kill for good measure, but the rest of Catalyst are gonna follow up with the kills and earn themselves their first round of Lotus. Good round for the side of Catalyst, and now this is going to be the first proper gun round for both these teams on this Lotus map. Already have the showstopper Catalyst. They've built that up for Starcase, and let's see if they do decide to indeed invest it in this round. They're kind of going into a bit of a crossfire here set up by Flo and Zan. They're gonna expect another person to be behind that box. The sun comes out and Flo gonna peek out with it. Knife out. Is he gonna be caught out? He does indeed. The Flo did get one in the end for good measure. And the box has not been cleared. Zan is still tucked behind that box. Catalyst now making their way. But Zan is still behind that box and they do not check him in the end. And now it's all down to Knight. Flash out. Concussing. Everyone is now gonna gang up on Knight, going for the knife kill, and they are gonna get it. So the third now for Vision 1. No investment of the ults from the side of Catalyst there. Blinding. Grabber. Clearing out. Alright, we are back now. V1 Oreo has gotten the first kill of this round here on tonight, and Amzito follows up with the trade along with HMI, but Flo gonna follow up with 2 kills of his own here. Zan still anchoring towards the seaside here. Frenzy gonna take him down now. Now a regroup for both players on the side of Catalyst. The spike in their hand, and oh, Vision 1 are kind of okay. Both players from their side are together as well, so we're curious to see how that encounter goes. And Stark is gonna land the first shot. One enemy
Flo follows 30 up, seconds left. and now it is a 1v1 between Frenzy and Flo, Got me. on to which Flo comes out on top. Go, go, go. I'm out of here. Gotta go. I'm out of here. Gotta go. Gotta go. Go, go, go. Running low. I'm out here. Shocking. We're good. Spike I'm outta down. here. C. One enemy remaining. Just swapping in infusion cells. Okay, my arms are good. We can go. Concussing! Go ahead. Stand your ground. One enemy remaining. Spike down. C. And I'm back. My bad. Okay, we have a timeout here. What's been going down here? Oh, Vision 1 on the lead. That's interesting to see. Yes. Yeah, welcome back. And yeah, Team Vision 1 has taken the lead here. Pretty comfortable one That's a huge once gap, though. again. Yes, indeed. Okay, we see a timeout by Catalyst here, and it seems like they really must be coming up with something because, like, 6-1, they seem to be in a huge trouble right now. Yeah, indeed. And well, Gonna fall back. they need to figure things out very soon here as Vision 1 again going for this ult play from the waylay here. And Okay, Zero some gets one, and Loki kind of kills Zero there mid that TP. 3-1, Frenzy tries his best, but Loki gets him down with a shorty. Defender is okay. That was a pretty much a push there that we saw, and it kind of worked in favor of them. 7-1. yeah, they Oh did my some God. good damage there. They did some good damage there with the sheriffs there, but I think yeah, V1 is not gonna be bothered with
that too much because their economy is still in a very good position. Yep, Like, they've got the guns. They even if they lose a couple rounds, they're kind of packed in for the future rounds. But हमारे attackers, okay, that's a pretty bad situation of economy. I mean, if they don't get this round, then GG's हो जाएगा. Okay, Frenzy gets that early on pick on Loki, but Loki goes in for the alt. Alright, they're checking the boxes there. One suppressed. Okay, they managed to take down, but we have Flo who takes down Knight, who was on the lurk here. Doors on, Flo goes off. Okay, Oreo coming in at the lurk, at the flank, and they get Starkish. A beautiful pick there. He gets on Oreo. He kind of, Oreo was probably obviously was not gonna expect somebody to just come up right on him, and he was just very confidently, running there. Okay, we have the Vice on the rubble control. Zen. yeah, Zan could This go is very Zen's huge in this round. corner. No one has cleared Zan. He gets the first one, and Oh well, god, the instantly way he's he gonna get turned. traded out. Yep, he gets traded out, and it's a 2v3, not far from winnable. It's winnable for the attackers, of course, and they need to get that round. Ackerman, never mind. Ackerman, Player he, standing. lies. He's made it on a 1v1 now. 30 seconds left. Look at the spike Wait. here, but Ackerman is Well, around the that corner, is not gonna land beautiful. the shot. Zito. Okay, He's gonna- obviously, Ackerman was obviously expecting him around the corner because, like, he kind of ulted off, and you can hear the ult, Omen's ult, by sound, obviously. So that was a good call. I mean, Ackerman was very close to actually, getting Hamzito down, but we had Hamzito with those fast reflexes, and he kind of gets him down at the end, finally getting attackers one round here. So it's 7-2. Hopefully they could come up with some, consecutive rounds if they want to kind of make a comeback here. But look at that. Okay, there we go. HMI gets down Zen. Not bad. Early picks. They are getting the early picks though, so that's a win. Oreo with the ult. Oreo. Oh, wait a second. That's an ult here already. Yeah, a lot of Ackerman, youth there's being so much going investment. on here. Hamzito gets Ackerman. Ackerman gets traded out there. Flo on Starkist. Frenzy on Loki. Hamzito on Flo. And Oreo. Wait, No, wait. 1v1. That was He's gonna. That was beautifully a very risky. executed. Yeah, that was a very Very risky play. risky, definitely. But again, that could happen in his favor because he was stunned, and then he just kind of came flying from his head, and I was like, "What in the world is going on?" Because like I'm not really familiar with Vela, I know she flies, but that was a heavy fly that we saw from Oreo there. But I mean, Frenzy did shoot him there, I think, and he kind of went back off. So 30 seconds hopefully. He's still 150 though. I thought a Frenzy kind of hit him off. Didn't he hit? Or did he just I run don't out of think his so. Yeah, timer? there was Yeah, no there was shot this connected timer, there right? in the end. Yeah, there's this And- like this timer that Whaley has when she just goes back. So I think that ran off, and this Oreo with the operator, I think he should Yeah. have just switched on with a Vandal there, but he's not bad I off think with the Frenzy operator. does hear it now. He Yeah, knows he that. knows. Oh, the Oreo instant is in the stun site, yeah. and the instant pick. Okay, that is good. This is what a Frenzy usually goes on about. I've seen him play off from this tree angle a couple times. He just doesn't wait. He doesn't wait for the. He heard the noise. He went for the stun, and then he went for the shot. So that's a good move there. And I mean, he was on the operator, so there wasn't much he could have done there at that point. So well played from him. Yeah, indeed. And now we see Catalyst kind of getting into the groove of things there. And these rounds, whatever they win, are going to be a huge confidence boost for them. One Maybe garner up a couple more rounds and make things competitive for Vision 1 here. Default here. Vision 1 immediately going for the rotates towards that C side. They kind of are kind of expecting that. Pretty slow round. There's no Yeah, early on picks that we've seen, like the couple 2 rounds that went back. They're kind of standing off randomly. We have couple at C and then a couple at B with Vice on the mid.
Okay, they're kind of going off towards the B here. Are they gonna execute B side? I'm not really sure, but we have Frenzy Knight towards the B, while the Spiker, which is obviously the Omen, he's off. They've not yet decided. They're kind of looking for picks, if I'm not wrong. They heard Zan. Knight Yeah, they has do heard indeed. Zan. Oh, there we go. Frenzy is gonna be the one to land the Good shot. early pick. Okay, they've got the early pick down, so they're in an advantage here. So they could. Oh, damn, that's a C execution there. 30 seconds left. Loki able to get down Knight there. 4v4. We have Oreo running off towards the C very, very fastly there. He gets that stun down. Okay, there you go. Frenzy for the rescue for right now, honestly. The credit goes to him there. He gets 2 down there, but the timer is ticking. They've got the spike planted now. HMI gets Loki. Okay, it's a 2v4. Zero with that fast reflexes and a whiff there, but Ackerman on the wait. Okay, that was a close one. He could have gotten Starcase there though. Pretty heavily damaged, but Starcase was able to take him down at the end, so not bad. Yeah, and now Catalyst within 1 round now of. I mean, no, sorry, Catalyst 1 round away to they could potentially get this one and make it a very close scoreline moving forward. They did kind of get like 3 consecutive rounds here, so that's a win Yeah. already. So there's a huge possibility that they could actually, win another one, obviously, and then maybe they do a much better job at their defense. So we never know about that. But other than that, so far, Team Catalyst very determined to look for a comeback. Hamziro with the ult. 2 ults that we're seeing at the same time. No much damage there. Hamziro for the info, but he doesn't cancel that ult. Zan able to get 2 down. Flo at the flank. There's so much going on at the same time. We have Flo on the ult. All lies on Frenzy here, who is stuck in Veile's ult. And somehow still able to land a shot here. 1v3 in front of him, but the Rolling Thunder is gonna get invested, and he's gonna get overwhelmed and a knife kill to finish things off. Loki gets Frenzy there with a knife. Switching sides. And I was obviously due to the momentum that they built up, with those 3 consecutive rounds that they won. I thought they were probably gonna get that 5th one, but seemed like Vision 1 had different plans this time, and well, it kind of went in for their favor. 8-4 on the board right now. I'm interested to see what Vision 1 does on attack though. So they are quite far, they have a lot of room. It's 4 rounds still down. So if Team Catalyst wants to make a good comeback, they need to win their pistol round. Warna to I would say it's just like Split. It's the same situation, Ali Kate, if you look at it. It's the 8-4, the usual sort of situation. They wanted the pistol. They kind of, I think, got the pistol at the end, but uske baad, it just all went down. Let's see if that's the case for Lotus. Oh, okay. And indeed, we start off. We got the first pick. Nice. Loki on Starkid. Loki on Hamziro as well. What is going on? There's so much picks at the same time. He just kind of took 2 of them down at the same time. It's like defenders. Okay, Frenzy able to balance it off. It's all Knight now, who was kind of towards the B. He's making his way towards the waterfalls. He is there. Zen and Oreo, 2 of the big players there. They're getting spike planted though, and now it all lies on his shoulder here. Right, lands the first shot with the classic here. Now a 1v1 against Oreo. With that classic Oreo, No, Oreo. who has a coach by He's the way. knife out. He needs to get his gun out, Oh, and he does so that in is time. unfortunate. That is unfortunate at the hands of Knight there, who had a I feel for him here. I mean, there was a bit of a timing there with Oreo though. I mean, there's a huge possibility he could have taken Oreo down, but Oreo was there with the fast reflexes there. He gets him down with the ghost instantly, so that is unfortunate for the defenders now, considering that they did not get the round up. Even the fact that they could have there was a huge possibility of getting it down, but unfortunately they couldn't, and now they're kind of in a huge gap now. The gap keeps increasing. Zan already early on pick for the attackers. Oreo with a Veile.
They are going in for the C. They are just rushing. They Gotta go. The first kill already going the way of Team Vision 1 here, and they've taken the site here as well, pushing towards this waterfall site, but the kills are going the way of Catalyst. A Sheriff shot from Starkiss and a classic from HMI here. Zan still anchoring towards the waterfall side Enemy here. remaining. Ackerman now left alone in a 1v2 here. He's been in these situations a lot, but it's not going to happen this we time. couldn't manage it there. Finally, though, a round here. for the defenders. Not bad. Gracias. You know, it's just 9-5, Alike. It's not far from, you know, actually doing a comeback, because that's the thrifty, you know, so that's quite a good round that they got here. Indeed, and yeah, Catalyst, they still have a chance in this game. It's not too far out of their reach. There. And well, off of that pistol, they're going to be looking to accelerate things and hopefully convert this buy round. And then after that, convert the bonus as well and kind of get a streak of rounds going as they did in the final couple of rounds of the first half. And we see a pause coming in. Okay, it's a tech pause. Can we see who disconnected? I don't see anybody who disconnected. What's the what's the deal there? There. Go, go, go. The KDA situation is not that bad though, considering that our defenders are quite close up towards the attackers. Last time there was a huge gap in the KDAs that we noticed, obviously, towards the Catalyst side in terms of, you know, how far our attack, you know, our Team Vision 1 players were. But this time, quite a good, you know, quite balanced off here and there, a bit off from the night side, but there's, you know, he's kind of doing the job. He did die a lot of times on Lurk, didn't he? Like I've not really seen much of it because I was a bit gone in the bed, but 9-5 on the board. Catalyst has a huge chance here if they kind of, you know, I mean, considering it's like their safe round, so there's Yeah, you know, whatever they're like, this does give them a chance to discuss what they want to do in the next round or so. So yeah, they got the rifles for this round, and like, you know, obviously there's a huge chance you can easily win against like 3-4 sheriffs, and you know, but like considering the aims and the game style that we've seen from Vision 1, if they make a thrifty, I wouldn't really be shocked because we saw Catalyst make a thrifty as well. So let's see. Still the timer. Don't know when that's gonna go on, but
Well, till then we will be, you know, Yeah, we'll just take a break looking. till then. Yep, just like Alec is like enjoying his food. I'm probably gonna go down get something as well. Yeah, indeed. Yeah. I am enjoying some watermelon. So, Oh damn. Wait, didn't the season go off? How are you even no, no, no. eating a There's watermelon, still bro? watermelon. Oh damn. Something new. Wait, it's probably not in my city. Okay, sure. Yeah. There. 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 It seems like the timeout is now over, and we're gonna get things back on the way, and immediately Catalyst not stopping whatsoever. Famzito following up with 2 Vandal kills, and Ozafly has gotten 2 kills with utility alone. Uh, one with the boomball and one with the fragment of the paint shells. Catalyst now within 3 rounds of Vision 1. There.
As you now see, team. Okay, actually. Spike planted. Last player standing. You know what we should do? I'll tell you. We should win. Could I have a draw? Thanks. One enemy remaining. Dropping smokes. I got the spike. Spike planted. My ult is ready. You're not being shot at, you're doing something wrong. Blinding! Blasting! Gotcha, fun. My turn. Trevor! Okay, I'm back here. Kind of disconnected. Pakistan Zindabad. But 11-6 here. Vision 1. They've got. They've entered the site here. It's it's a 3v5 here, and all of them jammed up towards here. Frenzy gets Ackerman down. Hamzito there gets that TP, but he dies. Thirty seconds left. Ten seconds left. Spike planted. One enemy remaining. Last player standing. I don't lose. Okay, finally here. No charges. Defenders with that round. 11-7. There's a huge possibility for Team Catalyst to actually make a comeback now, but I mean, considering the fact that our defenders. Remove my wall. Okay, we will be seeing buys here from both the sides. We have Loki
Zen, Oreo with that buy. We have Sheriff on flow. On the other hand, we have Starcase with the Vandal, Hamzito with that Guardian Knight on the Vandal, HMI Now on the we Vandal wait. as well. They're all going for it. Oreo alone making his way towards the C here. I mean, with Vice, of course, but oh, there, that was a close pick from Zen, but that kind of barely missed off towards there. Okay, we have rest of the team going towards the Vice's area. Look at that Knight position right in the smoke. Oh, there, a beautiful shot there by Loki, and Loki able to get solved that Vandal, which he can be using. There. Spike planted. Go get him. And Zito there manages that one pick. We have the Tejo's ult. Off your feet! And Satchel out. on the top there, what is going to be the fate of our attackers here? It's all jammed up. Zen able to get down. Zen gets traded off HMI Player Ackerman. standing. And Loki Oreo with that pick on Match HMI point. and Frenzy. He going towards the match point here with us Vision 1. Very determined to just close this off with Catalyst. 12-7. What is Team Catalyst gonna do as they see the opportunity slip by their hands? What are they planning now, considering they don't have the buy to kind of manage off this round? Oreo with that first pick on Starcase. He gets down. Frenzy as well. What in the world? He gets 2 down. Defenders already at a disadvantage here. We have Tejo. We have HMI. He takes down Oreo. Gets. Wait, enemy what? remaining. Okay, that was a close one. Knight, the man is left all alone. They will be pushing him off. There's nothing much you can do except that you Attackers have win. lost. Elwen with that, congratulations to Vision 1 for qualifying for the next rounds. They will be going. They will be the finalists. They are the grand finalists, and Team Catalyst. That was a good fight that was put it up on Lotus, of course, and we see good uh, game that was put up by Samzito. Starcase upping his performance there with the kills and everything. Frenzy with that beautiful 14 assists, and same goes for HMI and Knight, obviously at the end, but unfortunately it was just not in their fate. Well, at the end of the day, congratulations once again to Vision 1 for this um the victory. We will be seeing you guys off in the next match of the lower bracket. You guys, and do let us know which team you will be supporting for the next match, because it will be probably worse so against one of the teams. Not really checked the schedule yet, but yep, it will be an interesting match just like this one. Hope to see you guys there as well. Till then, take care.
Assalamu alaikum chat. We are joining you with our very beloved Skidrow brother. तो Skidrow brother मैच स्टार्ट हो गया जी. टीम वर्सा वर्सेस टीम TRH. दोनों तगड़ी टीमें with तगड़े stats. What about that, brother? What's your prediction for this match? You can talk now, brother. Hello. Join me, brother. Are you not talking? Hello. So Skidrow. हेलो 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 आवाज़ आ रही है? या जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है Skidrow. पहले मेरी सही इधर क्लियर आ रही थी, मैंने तो शो हो रहा है सच में आ रही है. Okay, Skidrow, we are live now, brother. ओके ब्रो. तो टीम में आमने सामने आ चुकी हैं और लगता है मैच स्टार्ट होने से पहले किसी प्लेयर को शू आ गया है और अपील फॉर द P10 और P10 आई गेस पहले ही ले लिया गया. ओके, तो Skidrow, दोनों टीमें आमने सामने हैं, तो क्या आपके ख्यालात हैं फॉर द बोथ टीम्स? मैं फैसला करूंगा बट अभी नहीं, अभी थोड़ा सा मैच चल रहा है. यार देखें, हम दोनों टीमें बहुत अच्छी हैं और दोनों टीमें मेरी फेवरेट हैं. तो क्या लगता है आपको, दोनों टीमें क्या हमें जो हम देखना चाह रहे हैं, जो फाइट चाह रहे हैं, क्या ये दिखाएंगे? I'm hoping for the best. Let's see. ओके जी इंशाल्लाह. Is the Untitled Entertainment, the player from 2 day 4 team versus Here. team versus Here. team TRH. बहुत ही अच्छी टीम है आपने सामने होने को है, मैच स्टार्ट होने को है बिल्कुल, और मुझे त्रे लग गई है. Revealing area. Found them. Trade. Spike planted. हेलो. Yeah bro. ओके जी, इस 4v2 नाउ टीम TRH साइट जो है वो कंट्रोल ले चुकी है एंड ऐसी Last player standing. मिल और बटरफ्लाई जो कि यहाँ पे बचते हैं, लेकिन टीम TRH के जैन एंड उनके ब्रीच जो कि राउंड को सिक्योर करते हैं लास्ट पे. तो ये दो पिक निकाल के इट्स 1v0 राउंड्स नाउ. It's a heaven map, both favorite maps for the both teams. ये पिक किनकी है हेमन? I guess ये पिक टीम TRH की है. Okay, TRH इस दफा जाएगी C पे with the faking or maybe no, they're taking control for the C. अब Ziggs अकेले हैं साइड में. अब दूसरी साइड पे देख सकते हैं साइफर जो कि पिक निकाले थे, Ziggs भी यहाँ पे पिक निकालते हैं. Blaze again one pick secure for the team और it's a 3v4 now and Ryzen जो कि A से flank पे हैं और Mesa and Ziggs जो कि garage hold पे हैं. काफ़ी अच्छी पोजीशन पे टीम TRH जा रही है. रुतान जो कि बिल्कुल काफ़ी अच्छे एज पे बैठे हुए हैं और दूसरी साइड पे ब्रीच टेरर जो कि होल्ड कर रहे हैं गराज और जिक्स यहाँ पे विप करते हुए शेरिफ एंड द पिक ले लेते हैं यहाँ पे ब्रीच एंड ब्लेज अगेन गॉट अ
3 picks and Mirza जो गराज के बाहर होल्ड कर रहे हैं, क्या यहाँ पे एक पिक सिक्योर कर सकते हैं? क्या ख्याल है इसके? जो I क्या don't think एग्जिट वो फ्रैग निकल पाएंगे? नहीं वो मरना He's चाहिए। holding so hard but no time for the defuse. Again, one round goes to Team TRH. The playing very well. Team TRH. Perhaps I will knock an arrow in ब्लेज advance. ब्लेज यहाँ पे But काफी it अच्छा will गेम very स्टाइल little दिखा time रहे for हैं। the ब्लेज actual यहाँ पे बिल्कुल साइफर का एडवांटेज लेते हुए वाक के साथ साथ ही साथ फ्रैग्स लेना इज अ गुड सेंटिनल रोल। और इज द बी आई गेस टीम TRH गोइंग फॉर द बी। दूसरी साइड पे टीम एसिड वर्सा जो है वो 2-2 खेल रहे हैं, 2 A पे और 2 B पे। और लेट्स सी Scanning ahead. एंट्री यहाँ पे की जा रही है। पुकी एंड टन टेरर पुकी अंदर जा चुके हैं। उसी साइड पे काउंटर यहाँ पे आता है। मिर्जा यहाँ पे विफ होते हैं। टॉप गन जो कि लो डैमेज खा चुके हैं, उन पे अटेम्प्ट्स हो रहे हैं। जैन काफी अच्छे डार्ट कर रहे हैं। जैन डार्ट के साथ यहाँ पे लेते हैं टॉप गन को। ओके जी, जिक्स आ चुके हैं यहाँ पे। जिक्स यहाँ पे पिक निकालते हैं। राइजन दूसरी साइड पे पिक निकाल लेते हैं। यहाँ पे डैमेज खा रहे हैं और ब्लेज साथ हैं Enemy के remaining. सॉरी बटरफ्लाई। और यहाँ पे काफी अच्छा राउंड निकाल दिया टीम में से। लास्ट पिक गोस टू बटरफ्लाई एंड काफी अच्छा राउंड निकाल लेती है टीम TRH। यहाँ पे P10 की अपील की गई है क्योंकि एक बॉय जो है No वो other option. Let's go. टीम वर्सा के डिस्कनेक्ट होते हैं। कोई इशू आ गया है? काफी धमाकेदार फाइट हो गई यहाँ पे इस दफा। तो क्या लग रहा है? अब तो 1-2 चल रहा है। कि तो क्या ख्याल है आपका? ये मैच क्या टर्न ले सकता है? ये राउंड डिसाइड करेगा। अगर तो ये ये राउंड डिसाइड करेगा because the both team has the bye and Ryzen is AFK. This is a little shit. और एसिड मिर्जा जो कि आई गेस उनके पास भी इकोनॉमी नहीं है। और दूसरी साइड पे टीम TRH जिनके ब्लेज के पास पीछे पैसा बचा हुआ है फॉर द नेक्स्ट राउंड अगर ये राउंड नहीं निकाल पाते। और आई गेस ये इकोनॉमी जो है कि काफ़ी मैटर करेगी अगले 3 राउंड फॉर द बोथ टीम्स। काफ़ी प्यारा खूबसूरत मैप है ये। 3 साइडें हैं, दोनों टीमें अच्छी हैं। काफ़ी अच्छा फाइट मिलेगा यहाँ पे। मैप्स में से जितने भी हैं वैलोरेंट के काफी प्यारे। Personally, I love that map. Also, my favorite map is Icebox. Icebox को लॉक करना चाहिए था गाइस इनको। But as So chat आज ठंडी पड़ी हुई है। I don't know why. एसिड Chat was so ठंडी। Xbox पे weak है। They always ban Xbox. Team Okay. always ban करती है। चले गुजारिश है जो स्क्रीन पे आ चुके हैं लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और सपोर्ट कीजिए अनटाइटल एंटरटेनमेंट जो कि आपके लिए लेके आता है टूर्नामेंट्स वक्तन बार टूर्नामेंट्स लगातार टूर्नामेंट्स for your entertainment, for the support, for the new Gen support जो कि स्पोर्ट को एक बढ़ावा देने के लिए एक अच्छी काविश है बाय अनटाइटल्ड एंटरटेनमेंट। आई गेस राइजन यहाँ पे वापस आ चुके हैं बट स्टिल डिस्कनेक्टेड हैं। और AFK is a disconnected bro। ये हेवन वाहद मैप है जिसके टावर में हर टाइम आग लगी रहती है इसके। तो जैसे ही दोनों टीमों के अंदर इस टाइम आग मच रही है दोनों के खिलाफ।
जो दर्शाएगा एक अच्छे गेम प्ले को। ओके राइजन वापस आ चुके हैं। आर द कॉल हो चुकी है, दो पास हैं, दो में टीम तैयार ने आमने सामने आन लई। जंग छिड़न इत्थे लगी है ते फड्डे पैन लगे। जंग छिड़न लगी तो फटे पैन लगे ने, नो डाउट बिल्कुल ऐसा ही है स्क्यूडो। दोनों टीम धड़ल्लेदार हैं और मज़ेदार हैं। लेट्स सी ये फाइट क्या करती है इस राउंड में, कौन सी टीम दूसरी टीम को पछाड़ती है। लेट्स सी। बी का अटेम्प्ट, बी साइड पुश, पोकी एंटर कर रहे हैं वॉल्स के साथ। यहाँ पे के फ्लैश और व्हील, साइड खाली है और रीटेक पे खेला जाएगा टीम मेसिड वर्सा की तरफ से, और कंट्रोल ले लिया गया। टीम टीआरएच प्लांट हो चुका है। ब्लेज जो के बाहर बैठे हैं, आई गेस ब्लेज जो के गराज को होल्ड करके बैठे हैं। लेट्स सी व्हाट दे डू। ओके 6 यहाँ पे अंदर आ चुके हैं मैच में, और 6 यहाँ पे पिक निकालते हैं। सेकंड पिक जाती है अगेन, और इस 4-3 नाउ। पूकी काफी अच्छा यहाँ पे स्लाइड करते, लेकिन ओके ब्लेज यहाँ पे क्रॉस कर चुके हैं बटरफ्ली को, लेकिन इन्फो आती है और साथ ही पकड़े जाते हैं। यहाँ पे जैन बचते हैं। 3v1 ना, यहाँ पे 2 गए आल्सो लो। ओके बटरफ्ली जो कि फुल हेल्थ के साथ है। मिर्जा और जैन कंटिन्यू 3 पिक निकाल के काफी अच्छा राउंड स्कोर करते हैं टीम के लिए। बहुत आला जैन, बहुत अच्छा प्ले विद अ गुड यूटेल, पूरे पेशेंट के साथ यहाँ पे पूरा राउंड निकालते हैं। टीआरएच जैन काफी अच्छा गेम प्ले दिखाते हैं। ये काफी अच्छा राउंड जो है कि अपनी टीम को ये देते हैं, जो कि इनकी टीम के लिए बहुत जरूरी था। दूसरी साइड पे वर्षा यहाँ पे बिल्कुल गुर्बत के साथ, गरीब शहरों के साथ खड़े हैं, और इधर जो कि टीआरएच विद वड्डी बंदूक, आहा वड्डा मोटरसाइकिल सनी देवल। और स्टन दे दिया गया था। लॉन्ग पुश हो चुके हैं जिक से थे अल्ट दे नाल। ओह ब्रीज बटरफ्ली यहाँ पे जा चुके आफ्टर शॉक के साथ। और दूसरी साइड पे ब्लेज पिक निकाले टॉप गन के गराज में। राइजन जो कि अभी भी वाक पे हैं। मिर्जा अल्ट के साथ इन्फो तो निकल आई है बॉयज की, यहाँ पे साइड छोड़ दी गई है। 3v4 ना। यहाँ पे राइजन पकड़ते हैं ब्लेज को और इन्फो निकालते हैं यहाँ पे। ओके जैन यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन जैन साथ ही वापस आते हैं। ओके इट्स अ टर्न चेंज। लॉन्ग राइजन जैन लॉन्ग पे जाते हुए कभी होल्ड कर रहे हैं। दूसरी साइड पे जिक्स एंड मिर्जा जो कि स्पेस बना रहे हैं साइड के लिए। यहाँ पे काफी अच्छा होल्ड किया टायरर ने, और ग्लूटाइन जो कि गराज क्रॉस काफी अच्छा। लॉन्ग राइजन आते हैं, राइजन टीआरएच जैन से एलिमिनेट होते हैं, और साथ ही ब्रीच की नहीं सॉरी जैन पिक निकालते हैं राइजन की, एंड जिक्स दूसरी साइड पे ब्रीच को पकड़ते हैं और ग्लूटाइन पे ओ मिर्जा विप कर देते हैं। काफी अच्छा चांस यहाँ पे। जिक्स क्या यहाँ पे राउंड निकाल सकते हैं। जैन दूसरी साइड पे था 1v1 नाउ। गन ड्रॉप की गई है। ओके जिक्स पुश करते हैं। जिक्स निकाल लिया पिक, बट राउंड नहीं निकाल पाए। काफी अच्छा प्ले किया है जिक्स ने, बट जैन यहाँ पे राउंड लेते हैं अपनी टीम के लिए। जैन बहुत ही अच्छा प्ले दिखाते हुए अपनी टीम को फ्रैग देते हुए, और साथ ही काफी अच्छे यूटिल के साथ टैकल करते हैं और राउंड सिक्योर कर लेते हैं। इस 1v4 राउंड्स नाउ टीम एसिड वर्सा जिन पे अब बाय आ चुका है। दूसरी साइड पे बोनस का प्ले दिखाया जाएगा। आई थिंक उनकी इकोनॉमी को उन्होंने काफी अच्छा डैमेज दिया है। यहाँ पे जिक्स उनको यहाँ पे जो है तोड़ते हैं उनकी इकोनॉमी को। और लेट्स सी इस दफा क्या देखने को मिलता है। आई गेस इस दफा ए पे एंट्री, और राइजन दूसरी साइड पे अपनी तारे बिछा के जो कि बिल्कुल तैयार खड़े हैं। पुश हो चुका है, पुकी शॉट पुश कर रहे हैं। यहाँ पे वायर है, वायर की इन्फो है। आई थिंक दोनों केजेस ओपन हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे पुकी वायर को पकड़ लेते हैं। जैन अच्छी पिक निकालने की, ओ सॉरी वायर तोड़ देते हैं। माय बैड, कास्टिंग वाड़ गई पांडिज। ओके टेरी यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं। मिर्जा भी आ चुके हैं। यहाँ पे मैदान को ग्लूटन निकाला जाता है, और ब्लेज यहाँ पे 2 बंदे को उठाते हैं विद स्पेक्टर और जिक्स। इट्स अ 2v2 नाउ। ब्रीच एंड जेथ दूसरी साइड पे एक सेंटिनल और इनिशिएटर यहाँ पे बचे हैं, और देखिए किसका कॉम्बो ज्यादा कामयाब होता है। जिक्स यहाँ पे कैमरे में पकड़े गए। ब्लेज काफी अच्छी पोजीशन पे बैठे हैं कार्नर होल्ड करके। दूसरी साइड पे जैन जो कि ऊपर राफ्टर, ब्लेज को वायर निकाला जाता है। ओके जिक्स यहाँ पे पिक निकालते हैं। जैन वर्सेस जिक्स अगेन, दोनों अच्छे प्लेयर हैं दोनों। लेट्स सी यहाँ पे क्या देखा जाता है, और यहाँ पे मिर्जा को स्मोक देना चाहिए। वेट कर रहे हैं जिक्स फॉर द स्मोक। जैन पीछे जा रहे हैं फॉर द अल्ट। जिक्स यहाँ पे टैप करेंगे, और ओके जैन ऑन अल्ट, एक टैप। यहाँ पे जिक्स बचा पाते हैं क्या राउंड।
ओके जैन यहाँ पे मिस कर जाते हैं लास्ट अल्टर यहाँ पे जिक्स काफी अच्छा राउंड सिक्योर करते हैं जैन पे इनको आ चुकी है यहाँ पे पिक निकाल लेते हैं जैन एसिड की जिक्स की बट राउंड जाता है टीम एसिड वर्सा को यहाँ पे देखा जाए आज फुल चार्ज है एसिड जिक्स जो है काफी अच्छे फ्रैग्स भी निकाल रहे हैं और 2 क्लच के साथ अपना राउंड भी सिक्योर कर चुके हैं तो जिक्स काफी अच्छा प्ले कर रहे हैं पर साथ में जैन काफी अच्छी ट्राई लेते हैं बट राउंड नहीं निकाल पाते और इस दफा टीआरएच जो कि विद द हाफ बाइल Need a drop. और विद द शेरिफ्स और दूसरी साइड पे भी टूटा फूटा बाय है लेट्स सी इस राउंड में क्या डिसाइड होता है गैस प्ले स्लो प्ले किया जाएगा फॉर द पीक्स अगर जैन यहाँ पे ड्रॉन कर रहे हैं पूछिए तो स्लो वॉक और यहाँ पे शरीफ के साथ थोड़े से शॉट्स दिए जाते हैं बटरफ्ली चेक बी होल्ड कर रहे हैं और पुकी उनको सपोर्ट कर लेते हैं वेट कर रहे हैं बटरफ्ली उनके आने का दूसरी साइड पे ब्लेज स्टिल जो कि ए शॉट होल्ड करके बैठे हैं बट राइज एंड स्टिल साइड एंड जैन अंदर से टक से छू के मौत को वापस आते हैं और यहाँ पे बी का रिवील किया जाता है बटरफ्ली यहाँ पे शॉट डाट देते हैं और आई गेस के बी का फुली कंट्रोल जो कि लेने के लिए रेडी है टीआरएच ब्लेज जो कि डोर पे आ चुके हैं दूसरी साइड पे देखा जाए तो यहाँ पे ओगलुथान जो कि लग पे थे सी पे और यहाँ पे पकड़े जाते हैं एसिड जिक्स के हाथों यहाँ पे टॉप गन काफी अच्छी पोजीशन पे क्या ब्लेज यहाँ पे ओ ब्लेज काफी अच्छा पिक निकाले थे लेकिन मिर्जा उनकी ट्रेड निकालते हैं बटरफ्ली पे पुश हो चुका है विद ओके बटरफ्ली यहाँ पे पुकी को अल्ट के अंदर मारते हैं काफी अच्छा मिर्जा ऑन अल्ट कर दी गई है टेरर पे टेरर ओके जैन यहाँ पे कुछ करेंगे ओ नहीं राइजन आते हैं ज्वाइन करते हैं और साथ ही टैप देते हैं और जैन को एलिमिनेट कर देते हैं और ये राउंड जाता है टीम एसिड वर्सा को कम बैक फॉर रियल गाइस 2 राउंड बैक टू बैक लिए गए हैं लेट्स सी अब टीआरएच क्या स्ट्रेटजी करती है इट्स अ टीआरएच राउंड नाउ टीआरएच विद द फुल बाय ओके स्किड टीआरएच का ये राउंड जीतना पड़ेगा बिल्कुल ये दोनों टीमें पहले राउंड दिए जाते हैं फिर राउंड लिए जाते हैं बैक टू बैक फाइट्स देखने को मिलती हैं जिक्स वर्सेस जैन और काफी अच्छा प्ले दिखाते हैं दोनों अपनी टीम्स के लिए दोनों टॉप फ्रैगेस चल रहे हैं और लेट्स सी ब्लेज जो कि तो ये सी ले लिया जाएगा बिल्कुल ऐसा ही है टॉप गन काफी क्लोज बैठे हैं रिवील तोड़ दिया गया और पुकी पुश करते हैं और पुकी पिक निकाल लेते हैं बट यहाँ पे जिक्स को बाहर जाना पड़ता है काफी अच्छे यूटल दिए हैं टायर ने इसलिए उनको रीटेक का वेट करना पड़ेगा साथ ही साथ ब्लेज जो कि बी पे लर्क करते हैं और साइफर को एलिमिनेट करते हैं काफ़ी अच्छे पिक के साथ एज यूजुअल ब्लेज हमेशा लर्क पे काफ़ी अच्छा फ्रैग लेते हैं जैन भी निकल चुके हैं 5v3 सॉरी 6 और यहाँ पे ब्लेज आमने सामने है ओके ओ 6 यहाँ पे जैन को एलिमिनेट करते हैं ब्लेज उनकी पिक लेते हैं और ये राइसन वर्सेस ब्लेज हो चुका है दूसरी साइड पर टेरर को एलिमिनेट किया गया है साथ ही साथ 2 पिक निकालते हैं जैन हो सकता है ओह सॉरी राइजन यहाँ पे 2 पिक निकालते हैं माय बैड ओह राइजन थोड़ा विफ करते हैं पोकी पे और विफ करते हैं और ग्लूटन बड़े टाइम पे ट्रेल लेके ये राउंड निकालते हैं अपनी टीम के लिए 3v5 का स्किड आई गेस ये दोनों टीमें काफ़ी अच्छा फाइट देने वाली हैं क्योंकि इस काइंड ऑफ जो कि टीम वर्सा भी काफ़ी अग्रेसिव स्टाइल के साथ खेलती है और लेकिन टीम टीआरएच काफ़ी अच्छे रीड के साथ जा रही है अभी बाय ब्लेज जो कि अपनी टीम के लिए काफ़ी अच्छे फ्रैग्स निकाल रहे हैं विद द स्लो प्ले काफ़ी अच्छे स्टैट्स के साथ कंट्रोल काफी अच्छा ओके इस दफ़ा गराज का कंट्रोल लेने की कोशिश गराज में पुश हो गया है यहाँ पे ड्रोन फ्लैश और कुकी यहाँ पे नाचते हुए जा रहे हैं जिक्स सामने खड़े हैं क्या जिक्स एलिमिनेट कर पाते हैं नहीं जिक्स बिफ ओके नहीं जिक्स पकड़ लेते हैं सॉरी मिर्जा निकालते हैं यहाँ पे टॉप गन यहाँ पे पकड़े जाते हैं जैन के और ब्लेज पिक निकाल लेते हैं जिक्स भी यहाँ पे पिक निकालते हैं 2v3 नाउ बटरफ्ली काफ़ी अच्छी पोजीशन पे क्या कर पाएंगे बटरफ्ली ओके पकड़े गए हैं यहाँ पे और दूसरी साइड पर राइजन ज्वाइन कर चुके हैं ओके जैन को एलिमिनेट किया जाता है ड्रोन हो चुका है स्टन यहाँ पे राइजन बैठे हैं और ब्लेज स्पॉट करते हैं और ले लेते हैं और दूसरी साइड पे बटरफ्ली वर्सेस टेरर यहाँ पर टैप देते हैं बटरफ्ली को और काफ़ी अच्छा राउंड सिक्योर कर लेते हैं काफ़ी अच्छा एलिमिनेट लेते हैं यहाँ पे द ग्रेट यूटल्स इस टाइम पे टेरर काफ़ी अच्छी यूटल्स दे रहे हैं ब्रीच के साथ और दूसरी साइड पे टॉप गन ज़रा थोड़ा सा अपने यूटल्स को मेंटेन नहीं कर पा रहे जिसकी वजह से उनको साइट जो है ना उनकी थोड़ी लूज आ रही है द सी और से 3v6 guys save and buy rounds
लेट्स सी व्हाट हैपन नाउ। अगर टीम एसिड वर्सा ये राउंड निकालती है तो काफी अच्छा बैक होगा। The economy is long push है, जिक्स की तरफ से स्टन हो चुका। ओके काउंटर स्टन देते हैं बट पोकी और निकाल लेते हैं। और दूसरी साइड पे राइजन पकड़े जाते हैं ब्लेज के, क्योंकि दो बॉयज वहाँ पे लग पे थे और यहाँ पे 3v5 हो चुका है। और यहाँ पे जैन फ्लो आ रहे थे और गन ओके मिर्जा पकड़े जाते हैं। जैन यहाँ पे गन फाइट होती है, फास्ट गन के रहते जैन काफी अच्छा फ्लैश देते हैं टेरर, लेकिन पकड़े जाते हैं। ब्लेज भी यहाँ पे दो के काफी अच्छे डुअल्स निकाले गए, काफी अच्छी ट्रेड्स ली गई हैं दोनों साइड से। भाई बट आप ये इग्नोर करें कि मिर्जा को देखने के बावजूद जैन स्टे टोटली काम, हिज माउथ नॉट या इवन ट्रेडेड। वो थोड़ा सिचुएशन इस तरह थी कि आमने सामने हो गए हैं, तो टाइमिंग और वो एकदम से डरना और मिर्जे का मरना दोनों ही वर्षा के लिए काफी नुकसान दे रहे हैं। ओए नुकसान दे गए वर्षा के लिए। यार तू भंग पी के सुता रहे। नहीं मिलने का टीआरएच निकल। ओके यहाँ पे इस दफा टीम वर्स बी से पुश करती है, गराज से पुश करती है फॉर द कंट्रोल, बट सी साइड छोड़ दी जाती है फॉर द कंट्रोल। और यहाँ पे मिर्जा वर्सेस ब्लेज, यहाँ पे क्या होगा? ये फाइट भी काफी जो है मायने रखती है। दूसरी साइड पे राइज एंड बटरफ्लाई ओ डोर से निकलते हैं और टॉप गन और साथ ब्लेज पकड़ लेते हैं और ब्लेज यहाँ पे उठा लेते हैं ऐसे मिर्जा को भी। और दूसरी साइड पे पुकी उठाते हैं, जिक्स को यहाँ पे मिस कर देते हैं। टेरर और वहाँ पे साइट हो चुकी थी जिससे जिक्स को बाखबर थे कि दुश्मन हर साइड पे है। यहाँ पे टेरर ओके टेरर पकड़ाए जाते हैं बटरफ्लाई की साइड पे, लेकिन उसी दूसरी साइड पे पूरा कंट्रोल ले लिया गया है फॉर द ए साइड और प्लांट हो चुका है। और राइजन जो कि होल्ड कर रहे हैं ऊपर, और बटरफ्लाई यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं शॉट को। ओके बटरफ्लाई अकेले पिक करते हैं, डबल पिक पे अब बचते हैं राइजन को भी जैन पकड़ लेते हैं। जैन आज फुल चार्ज है जी, जैन और जिक्स जो है दोनों चार्ज हैं इस टाइम। जैन को आज ड्यूलिस्ट होना चाहिए था नो डाउट। जैन काफी अच्छा एम आज उनका चल रहा है दोनों वैसे जैन और साइफर। चैट की तरफ से स्किड्रो भाई थोड़ी सी रिक्वेस्ट आ रही है कि आप जो है थोड़ा सा पीओवी जो है अटैकर्स पे भी रखें। जैन यहाँ पर डिस्कनेक्ट एंड अगेन रीकनेक्ट हो चुके हैं। मैंने मेजॉरिटी पीओवी अटैकर्स पे ही रखा है आई गेस। मेरे लाइफ में ओके तो यहाँ पे ऑब्जर्विंग पे कोई और है। ओके अर्ट के साथ पुश हो चुका है दूसरी साइड पे। ओके बी से निकाल लिया गया है जिक्स काफी अच्छा फ्रैग निकल गया है एसिड का। और दूसरी साइड में पुकी पे स्पैम किया जा रहा है, पुकी यहाँ पे बच जाते हैं। इट्स अ 4v5 नाउ। दूसरी साइड पे टॉप गन की इन्फो ब्लेज को, ब्लेज यहाँ पे बी पे वॉक करते हुए मिर्जा पकड़े जाते हैं और टॉप गन की भी इन्फो है। टॉप गन यहाँ पे ब्लेज से एलिमिनेट होते हैं। नाइस 3 पिक बैक टू बैक। यहाँ पे राइजन पकड़े जाते हैं, क्या हुआ एस हो पता है बटरफ्लाई यो एस यहाँ पे उनका मार लिया जाता है। बटरफ्लाई एस खा जाते हैं। पुकी आउटसाइड बी। लेट्स सी हम क्या बनता है। केरा पै गया मुंडे नु, केरा पै गया जवानो। ओ मनु तो टीपी कर दे दो मैं आप ले दवाले, लेकिन नहीं ग्लूटाइन वर्सेस इथे पेड़ पै गया है 1v1 यहाँ पे। ओके ग्लूटाइन यहाँ पे थ्रो करते हैं, नाइफ के लिए ट्राई की जाती है लेकिन जैन यहाँ पे थर्ड डार्ट के साथ उनको एलिमिनेट कर देते हैं। ओके काफी अच्छा चाका का अटेम्प्ट किया गया। ऐसा लग रहा है जिस तरह के मैं V1 और टीम कैटलिस्ट का मैच देख रहा हूँ और वर्षा टीम कैटलिस्ट की जगह और रुथलेस जो है वो V1 की जगह सेम मैच चल रहा है। उनका भी फर्स्ट मैच 9-3 करती था। बिल्कुल लेट्स सी यहाँ पर साइड स्विच हो चुकी हैं, अटैकर्स पे आ चुकी है वर्षा और डिफेंडर्स पे आ चुकी है टीम TRH। लेट्स सी यहाँ पे क्या प्ले देखने को मिलता है। इस 9-3-9 और आज आई गेस के BO1 है शायद। वैसे तो इस चीज को 9-3 कैसे कहा जाता है, सो लेट्स सी कैन वर्षा लिटरली मेक इट एज अ मिथ देखते हैं ये सिर्फ वर्षा के लिए कामयाब होती है कि नहीं। यहाँ पे पुश किया गया जिक्स के लिए, जैन ऊपर होल्ड करके बैठे हैं, ग्लूटाइन जो कि रीटेक कर रहे हैं फॉर द साइट। और दूसरी साथ ही साथ राइजन जो कि डोर होल्ड करके बैठे थे विद द कैम। और टेरर और ब्लेज जो कि सी कंट्रोल लेके बैठे हैं, आई गेस बी का भी कंट्रोल। और वापस आ जाते हैं, पूकी बी पे ज्वाइन करते हैं टेरर को।
ओके ग्लूटाइन जो कि ए पे और जैन वहाँ पे शॉट दे रहे हैं और टीम ए से काफ़ी स्लो खेल रही है इस दफ़ा, काफ़ी समझदारी के साथ पिक ग्राइंड करने के चक्कर में वॉक कर रही है। ग्लूटाइन यहाँ पे ए शॉट पुश कर चुके हैं, साथ ही साथ क्लियर कर रहे हैं। दूसरी साइड पे यहाँ पे लगता है यहाँ पे बटरफ्ली आई गेस स्पॉट नहीं हुए, उनको इन्फो आ I चुकी guess है कि यहाँ Ziggs से can be spotted फॉर द here. सी नो आई गेस जिक्स। ओके जिक्स यहाँ पे पकड़े जाएंगे। ओके जिक्स की इन्फो आ चुकी है ग्लूटाइन को। ओहो ग्लूटाइन यहाँ पे फ्राई कर गए हैं और कोई नहीं ये शॉट देख रहा था फॉर जिक्स। सब यहाँ से चले जाते हैं, जिक्स पकड़े जाते हैं। ब्लेज उधर अपनी पोजीशन पे Ryzen स्टिल भी है। पकड़े ग्लूटाइन गए। सेकंड पिक फॉर द राइजन। यहाँ पे राइजन एलिमिनेट, दो पिक के निकल चुकी हैं। मिर्जा की मिर्जा यहाँ पे गराज में पिक निकालते हैं बट इस 1v4 नाउ। सेकंड पिक निकाल लिया मिर्जा की तरफ से। ओके पुकी यहाँ पे स्टन देते हैं, स्टन जाता है खाली और लॉन्ग ग्लूटाइन जॉइन करते हैं और यहाँ पे टीआरएच जैन और पुकी दोनों सिटी हैं। ओके काफी अच्छा पुकी की तरफ डिस्ट्रैक्ट किया जाता है। जैन भी डैमेज देते हैं लेकिन पिक जाती है पुकी को और ये राउंड की टीम टीआरएच अपने नाम कर दिया। एसिड वर्सा 3v10 राउंड नाउ। काफी ज्यादा मार्जिन है, ये काफी ह्यूज मार्जिन I'm है over them. जो कि Fnatic वाला कमबैक चाहिए। बिल्कुल फनेटिक वाला कमबैक चाहिए बॉयज। होप नहीं छोड़नी है, तो अपनी मोड़नी बिल्कुल भी। लेट्स सी कमबैक फॉर रियल और नॉट, क्योंकि मिथ तो यहाँ पे पांडे में बढ़ चुकी है ना, कर्स वाली मिथ के तो शलारे लग गए हैं और फोर्स करती है यहाँ पे टीम वर्सा। लेट्स सी, मुझे तो लगता है सीधा थ्रो ही कर रही है टीम एसिड वर्सा आज। If they go I'm see outta it's a here. good round because they don't have anyone there. टैरी ग्राज से पीक लेते हैं माशा की और यहाँ पे पुश किया है जिक्स और फ्लैश और ये जिक्स घुस गए हैं और पीक निकाल गया। ग्लूटाइन जो पे लॉन्ग पे आ रहे हैं, पे यूटिल्स किए जा रहे हैं। ओके यहाँ पे कुकी निकालते हैं बटरफ्ली को और लॉन्ग पे भी आ चुके हैं और स्टिल टॉप गन होल्ड गराज इस 4v4 गाइस। स्मोक में होल्ड ले लिया गया है और यहाँ पे टॉप गन की इन्फो मिलती है, टॉप गन को एलिमिनेट किया जाता है। जिक्स शॉर्ट करते हैं सिटी को और यहाँ पे गराज की फाइट है। अब गाइस लेट्स सी, लॉन्ग पे जाते हैं राइजन फॉर द होल्ड फ्लैंक। ड्रोन किया जाता है और पुकी यहाँ पे क्लोजिंग करते हैं। मिर्जा देखते हैं और मिर्जा पिक निकाल लेते हैं और दूसरी साइड पे राइजन भी पिक निकालते हैं। यहाँ पे जिक्स निकालते हैं ब्लेज को और जैन वर्सेस जिक्स नाउ। वेट किया जाता है पूरा। जिक्स पीछे निकलते हैं, जैन को थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे राइजन थोड़ी गलती करते हैं, जल्दबाजी कर जाते हैं लेकिन जिक्स पूरा सबर के साथ। ओके नाइस, जिक्स काफी अच्छा राउंड लेते हैं अपनी टीम के लिए। 17 फ्रैग्स और दूसरी साइड पे टॉप फ्रैग कर रहे हैं ब्लेज यहाँ पे 23 किल्स के साथ काफी अच्छे मार्जिन पे है टीम टीआरएच इज 4-10 नाउ। अगर 3-10 से कम बैक होता है तो आप नया मिथ भी कह सकते हैं फॉर द टीम वर्सा कि ये नया कर्ज किया गया। लेट्स सी क्या कम बैक हो सकता है। और इस दफा टीआरएच जो कि पुश कर रही है बी और ये यहाँ पे काफी अच्छी फाइट मिलने की, यहाँ पे काफी यहाँ महायुद्ध होने वाला बिल्कुल। ओके पुश करके हैं जिक्स जो कि उधर ब्लेज दूसरी साइड पे राइजन आ चुके हैं। यहाँ पे राइजन पिक निकालते हैं और साथ ही साथ उनकी ब्रीच से पिक निकाली जाती है। टेरर यहाँ पे पिक निकालते हैं। जिक्स काफी अच्छी पोजीशन पे, काफी अच्छी पोजीशन पे है जिक्स यहाँ पे इजी 2 फ्रैग निकाल सकते हैं। टॉप गन उनको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पे पिक निकाल ली जाती है। दूसरी साइड पे जैन वॉक कर रहे हैं। ओके जैन निकाल लेते हैं यहाँ पे टॉप गन को। इट्स 3v1 नाउ। यहाँ पे मिर्जा ज्वाइन कर रहे हैं उनको। मिर्जा टैप देते हैं, जैन को एलिमिनेट करते हैं। 5-10 नाउ, काफी अच्छा यहाँ पे राउंड सिक्योर किया जाता है। काफी अच्छी फाइट, ट्रेड पे ट्रेड टूल्स निकाले गए यहाँ पे। थोड़ा टाइमिंग होती है टीआरएच के साथ लेकिन टीआरएच की रीड इस दफा गलत जाती है और टीम रल्स की स्टैट्स पे भारी टीम टीआरएच टीम रूथलेस, इट्स नॉट अ रेल्स। टीम यार स्पेल्स ऑलमोस्ट सेम ही है ना, तो एब्रिविएशन सेम ही लगते हैं। यप, उसी साइड पे टीम एसिड इस दफा वर्सा जो है कि ए पे वॉक इन किया जा रहा है और दूसरी साइड पे सी एंड क्राच एंड बी पे काफी अच्छा होल्ड है। ब्लेज यहाँ पे अपने तारों के साथ काफी अच्छे कंट्रोल के साथ कैमरा ऑन करके बैठे हैं, मूवी भी बना रहे हैं और दूसरी साइड पे शॉट बिल्कुल क्लियर नहीं किया जा रहा। राइजन जो कि पीछे खेल रहे हैं। जिक्स यहाँ पे एंट्री करते हैं लेकिन पीछे हट जाते हैं।
और ये ट्रेवर में पकड़े जाते हैं यार। ब्लेज यहाँ पे उनकी फ्रैग निकाल लेते हैं। यहाँ पे जिक्स भी पकड़े जाते हैं यार, काफी लो है। मिर्जा यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे ग्लूटान को करते हैं एलिमिनेट और काफी अच्छा प्रेशर बिल्ड करते हैं। ओके ओके, काफी अच्छा शॉट डाल दिया यार बटरफ्लाई की तरफ, और साइफर को यहाँ पे एलिमिनेट किया जाता है। इट्स 4v3 नाउ। कम बैक फॉर रियल गाइस नजर आ रहा है, लेकिन मिर्जा को बाहर निकाला गया है। जैन यहाँ पे सपोर्ट कर लेते हैं तो बॉयज को द इन्फो, और दूसरी साइड पे टेरर एंड पुकी जो कि ज्वाइन करने वाले हैं सिटी, और स्टन दिया जाता है। यहाँ पे 6 पकड़े जाते हैं, लेकिन टॉप गन निकालते हैं ट्रेड उनकी। मिर्जा ऊपर आते हैं यहाँ पे। ओके, जैन जंप करते हैं, जैन नीचे आते हैं फ्लैश के साथ। मिर्जा इन्फो लेते हैं काफी अच्छी, और टॉप गन पिक निकालते हैं टेरर की। काफी अच्छा राउंड निकाला गया टीम में से वर्सा। ब्लेज काफी अच्छे एडवांटेज पे थे, लेकिन थोड़ा टाइमिंग पे मिस मारते हैं। लेट्स सी अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी भी काफी अच्छा मार्जिन है। अगर यहाँ पे कम बैक होता तो काफी अच्छी फाइट देखने को मिलती दोनों की। मैं तो जिस चीज के लिए एक्साइटेड रहता हूँ हमेशा इसी फाइट के लिए यहाँ पे बैठा होता हूँ। आप एक चीज नोट की है, यहाँ पे सिर्फ टेक्निकल जो टेक पोज थे वो ही लिए गए अभी तक दोनों टीमों की तरफ से। यहाँ पे टाइम आउट नहीं लिया गया कोई सी स्ट्रेटेजी के लिए, लेकिन दोनों टीमें बूस्ट अप है, फुल्ली चार्ज हैं, बैक टू बैक फाइट। और यहाँ पे लॉन्ग पे प्ले सपोर्ट कर लेते हैं तो बहुत कम वो बिल्कुल ये पुश किया जाता है। 6 टन के साथ यहाँ पे काफी अच्छा पिक निकाल लेते हैं ब्लेज का, और यहाँ पे कंट्रोल लिया गया ए का। राइजन जो कि टीम को ज्वाइन कर रहे हैं, कोई लर्क नहीं किया जा रहा। 5 मैन जो कि साइड में है, टेरर काफी अच्छे स्टन पे हैं। दूसरी साइड पे जैन भी ऊपर आफ्टर खेल हैं, और यहाँ पे टॉप गन यहाँ पे निकल जाते हैं विद काफी अच्छे। ओके, बटरफ्लाई यहाँ पे मिस कर देते हैं अपने शॉट, और स्टन हो चुके हैं। ग्लूटान यहाँ पे टीपी करते हैं, और एसिड जिक्स होल्ड किए बैठे हैं। बटरफ्लाई पिक निकालते हैं यहाँ पे। इट्स अ 2v1 नाउ। जैन ऊपर राफ्टर होल्ड करके बैठे हैं, 6 नीचे बैठे हुए हैं। 6 काफी लो हैं, 6 लिटरली 1 HP हैं। और दूसरी साइड पे जैन बॉक्स होल्ड करके राइजन बॉक्स होल्ड किए बैठे हैं, काफी अच्छा सब्र कर रहे हैं। जैन को प्रेशर में लिया जा रहा है। जैन यहाँ पे ओके कम बैक हो चुका है जी। 7-10 नाउ। कमबैक इज रियल ब्रो। लेट्स सी, इकोनॉमी को काफी डैमेज किया हुआ था उनकी, और इस दफा अगर ये राउंड TRH नहीं निकालती तो आई गेस इनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल पैदा कर देगी वर्सा, क्योंकि अच्छी इकोनॉमी के साथ भी हैं, और जो बैक टू बैक उन्होंने 3-4 राउंड निकाले हैं। तो प्रेशर बस थोड़ा सा आपने देखा है कि जो है ना ऊपर नीचे किया गया है। तो लेट्स सी, ये राउंड काफी अच्छा डिसाइड करेगा कि यहाँ पे टीम्स क्या, या बिल्कुल बी से। ओके, विंडो होल्ड की जा रही है, यहाँ पे स्लो खेला जा रहा है। राइसन कैम के साथ ग्लूटेन की इन्फो निकालेंगे। ग्राय से सपोर्ट कर लिएगा। टॉप गन यहाँ पे मरने के कगार पे लग रहे हैं मुझे पूकी। ओके, टॉप गन पिक निकाल लेते हैं, एक ब्रीच निकाला जाता है, और यहाँ पे पूकी काफी अच्छे एडवांटेज पे मिस करते हैं यहाँ पे टॉप। ओ, गराज की इन्फो छोड़ी जाती है। साथ ही 3v3 नाउ। साइफर्स है बहुत हार्ड एंड आई गेस साइफर रिजल्ट निकालेंगे। पहले राइजन यहाँ पे निकालते हैं। टॉप गन स्टन में फंस चुके हैं, और राइजन यहाँ पे ओके बी ब्लेज जो कि होल्ड कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे साइड हो चुकी है, साइड खाली है। अब ब्लेज ओके जैन की तरफ सेलेक्ट कर देगी, और बटरफ्लाई पकड़े जा चुके हैं, और काउंटर काफी अच्छा जाता है। इस 3v2 नाउ। राइजन जो कि बैक साइड पे बैठे हैं। पूकी ओके, दोबारा अल्ट की गई है दूसरी साइड से। ब्लेज जो कि बी साइड से आई गेस राइजन यहाँ पे ले लेते हैं इन्फो, और टॉप गन उनकी ट्रेड निकालते हैं। अल्ट हो चुकी है यहाँ पे, राइजन को एलिमिनेट किया गया है। टॉप गन काफ़ी अच्छी पोजीशन पे हैं, यहाँ पे कुछ भी देखने को मिल सकता है। यहाँ पे स्टन दिया गया, दोनों स्टन हो चुके हैं। ओह, यहाँ पे टॉप गन विफ करते हैं, और जैन और पूकी दोनों मिल के काफ़ी अच्छा राउंड ले लेते हैं, और यहाँ पे थोड़े मामलात खराब हो जाते हैं वर्सा के लिए। 7-11 नाउ। 7-11 24 आवर। ओह, काफी धमाकेदार फाइट रही है ये। वाह, क्या बात है। वर्सा बिल मुकाबल टीम TRH दोवें आमने सामने वडिंग टीम है, जो कि नाल राउंड एक दूजे तो खिंच रही हैं, लेकिन लास्ट राउंड जिंदे च बाय दा नुकसान कीता है टीम वर्सा ने। लास्ट मैच टीम वर्सा, बिल्कुल टीम वर्सा ये राउंड अगर लेती है तो वापस आते हैं। पूकी पे पुश किया जाएगा। जैन 6 वापस आ जाते हैं। जैन दूसरी साइड में इस टाइम पे।
नहीं आई गेस जैन की पिक निकाल ली थी, माय बैड। जिक्स जो कि अभी भी अल्ट पे है, और राइजन जो कि गराज स्टील होल्ड कर रहे थे, ग्लूटान जो कि बी की काफ़ी अच्छी पोजीशन पे, अगर वर्षा वर्षा यहाँ पे बी के लिए उतरती है तो काफ़ी डैमेज खा सकती है अपने लिए। टॉप गन जो कि अभी भी स्टिल स्टो है। ओके पुकी स्पॉट कर लेते हैं राइजन को, राइजन काफ़ी अच्छा टैप देते हैं यहाँ पे, पुकी को एमुलेट किया जाता है। ओके यहाँ पे ए सिट देखा जिक्स जाए दूसरी तो साइड ये पे फेक ब्लेज पे प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है विद द डार्ट, और यहाँ पे वायरिंग और कैमरे के साथ, और ब्लेज काफी अच्छी पोजीशन पे है, साथ ही और जिक्स पकड़े गए लेकिन बच गए हैं, साथ नाइफ के साथ ही तोड़ लेते हैं, अपने को सिक्योर करते हैं। दूसरी साइड पे सी का कंट्रोल ले लिया, काफी अच्छा फेक किया गया ये, और पीके भी जो निकाले, लेकिन ग्लूटन काफी अच्छी पोजीशन पे है यहाँ पे। ओके इन्फो निकाली गई है यहाँ पे, 6 जो कि एलिमिनेट हो चुके हैं, 4v3 नाउ। ग्लूटन काफी अच्छे पोजीशन पे है, राइजन वापस आ रहे हैं, और राइजन यहाँ पे विदाउट गन, और यहाँ पे ग्लूटन ओह ये काफी अच्छी टाइमिंग होती है। राइजन यहाँ पे कैमरा ऑन कर लेते हैं और मारे जाते हैं। बटरफ्ली काफी अच्छी पोजीशन में, बटरफ्ली की इन्फो नहीं है। दूसरी साइड पे मिर्जा ब्लेज को लेते हैं, टेरर यहाँ पे। ओके काफी अच्छी पोजीशन, ब्लेज एंगल क्लियर करते ही साथ ही पिक निकालते हैं ब्रीच की, एंड ब्रीच एलिमिनेट हो चुके हैं। सर 2v1 नाउ, ग्लूटान द लॉन्ग पे, और टीम में वर्षा जो कि ओके मिर्जा नहीं छोड़, तीसरा फ्रैग निकालते हैं अपने लिए, टैप देते हैं, एंड द राउंड गोज टू टीम वर्षा। टीम वर्षा वापस आती है, इकोनॉमी को आके डैमेज किया जाता है, इस दफा सेव, और ये राउंड अगर वर्षा ले लेती है तो काफी अच्छी एडवांटेज पे जाएगी। यहाँ पे काफी अच्छे राउंड सिक्योर किए जा रहे हैं। मुझे जरा टाइम दें आप। because they cannot afford TRH at 12, you know. बड़ी ओके यार, कास्टिंग मूव्स हो गया मेरा। स्किटो कंटिन्यू करें, मैं पानी के लिए आया हूं। Okay, bro. TRH is pushing. ओके यहाँ पे दोनों टीमों की तरफ से बैक टू बैक फायर दिए जा रहे हैं, सी का कंट्रोल लिया जा रहा है। जैन यहाँ पे रीटेक का वेट करते हैं, और ओके ब्लेज जो कि प्रॉपर फ्लैंक पे हैं इस दफा, और बिल्कुल साइड दी गई है, एंड और रीटेक का वेट किया जा रहा है। यहाँ पे ब्लेज कार्नर टू कार्नर क्लियर करते हुए पीछे लग कर रहे हैं, और जिक्स इस दफा पीछे खेल रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं। राइजन भी उनको ज्वाइन कर चुके हैं, बटरफ्लाई भी लॉन्ग पे आ चुके हैं। यहाँ पे मिर्जा पिक निकालते हैं, क्योंकि टीआरएच स्टन काफी अच्छा दिया जाता है, और साथ ही साथ पिक है यहाँ पे एसे मिर्जा स्टैन और सॉरी 6 जो है कि निकालते हैं, और स्टैन एलिमिनेट किया जाता है राइजन की तरफ से। अब पीछे बचते हैं ग्लूटाइन बी के बाहर, और आई गैस इन पे भी इस दफा चाके का अटेम्प्ट करती है ये टीम, क्या करती है जो कि ट्राई किया गया था बटरफ्लाई पे, और यहाँ पे थ्रो किया गया है गैस, और ये चाका दे दिया गया है टॉप गन की तरफ से ग्लूटाइन को। वाह जी वाह, उनका अटेम्प्ट खाली जाता है बाहर, लेकिन ये लड़के चाका कर देते हैं। इट्स 9-11 नाउ। कहाँ 7-11 से 9-11 पे बात आ चुकी है। तरक्की हो बिल्कुल हर बार एक राउंड की बात की जाती है, और इस दफा भी थोड़ा सा हाफ शेयर। वो अलग बात है कि जो 7-11 यूज करते हैं उनके लिए 9-11 एक बहुत बड़ा ट्रॉमा, बट बिल्कुल हम उस पे बात नहीं करेंगे। अभी टूर्नामेंट में वापस आते हैं हम लोग, यहाँ पे जो फाइट देखने को मिलेगी अब उस पे फोकस करें, इग्नोर करें उनको। ओके यहाँ पे अगेन गेम प्ले किया, थोड़ा माइंड गेम किया जा रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे साइड दी जाती है, और जिक्स यहाँ पे सपोर्ट हो जाते हैं, डैमेज खाते हैं। जैन जो कि गराज में आ गया काफी अच्छी पोजीशन पे, यहाँ पे जिक्स यहाँ पे थोड़ी हेयर लेते हैं उनकी, और अल्ट के साथ ही साइड पीछे छोड़ दी जाती है, और मिर्जा राइजन पीछे आ गए हैं। बिल्कुल काफी अच्छा फ्लैंक दिया गया ये। द 4v3 मिर्जा अल्ट पे, और ओ ब्लेज उनको एलिमिनेट कर देते हैं 3v3 नाउ। ओके बटरफ्लाई ने यहाँ पे एक पिक निकाल लिया है, सब 3v2 नाउ। अब एसिड वर्षा एडवांटेज पे है, ग्लूटाइन जो कि बी से फ्लैंक कर रहे हैं, ये डैमेज दे सकते हैं काफी अच्छा इनको, क्योंकि बिल्कुल भी ये सोच नहीं रहे कि बी से कोई फ्लैंक आ सकता है। ग्लूटाइन काफी अच्छे पोजीशन पे, और यहाँ पे जिक्स मरने के कगार पे, बिल्कुल जिक्स यहाँ पे पकड़े जाते हैं। 2v2 नाउ, लॉन्ग से पुश हो चुके हैं, पीछे से फ्लैंक भी है, दूसरी साइड पे ब्लेज भी साइड पे आने को है।
ओके, यहाँ पे टीम वर्सा थोड़ा खतरे के दायरे में आ चुकी है। यहाँ पे घेरा तंग किया जा रहा है, ब्लेज आ रहे हैं, टॉप गन काफी। ओके, टॉप गन यहाँ पे ओ ब्लेज, ओफ ओहो, ब्लेज यहाँ पे बड़ा गंदा वेव करते हैं टॉप गन पे, और टॉप गन इसका एडवांटेज उठाते, टैप देते, एलिमिनेट कर देते हैं। दूसरी साइड पे बटरफ्लाई स्पॉट करते हैं, आमन का ले लेते हैं, और ये राउंड जाता है टीम वर्सा को। और यहाँ पे टाइमर लेती है टीम टीआरएच। दिस इज दिस इज वर्षा जो कि कम बैक करती है, काफी काफी बुरे हालातों से निकल के आती है। टीम टीआरएच जो कि काफी अच्छे एडवांटेज पे चल रही थी, साथ ही साथ डिफेंडिंग टू अटैकिंग जो कि राउंड ले रही थी साथ साथ। और अब ये टाइम आउट जो कि हम दोनों कास्ट वेट कर रहे थे कि दोनों टीमें अभी तक यहाँ इस नौबत पे नहीं पहुंची, और जैसे कम बैक आया और लास्ट राउंड जिस तरह से थ्रो किया गया, और जो फ्लैंक और काफी अच्छे स्टैट के साथ वर्षा ये राउंड लेती है, और साथ ही ग्लूटाइन भी दूसरी साइड पे काफी काउंटर उनको जो फ्लैंक देते हैं वो भी काफी अच्छा नुकसान पहुंचाते हैं उनके ड्यूलर्स को एलिमिनेट करके, जो कि टॉप फ्रैगर हैं। लेकिन ब्लेज दूसरी साइड पे टॉप फ्रैग कर रहे हैं विद द साइफर, एक द सेंटिनल। काफी अच्छा प्ले दिखाया जाता है, लेकिन लास्ट पे ब्लेज बीफ कर देते हैं और टॉप गन उसका जो एडवांटेज उठाते हैं, और नो डाउट वो राउंड सीधा सीधा थ्रो हुआ नजर आया है। ओके, दोनों टीमें आपस में सर जोड़ के बातें कर चुकी हैं, यहाँ पे तसल्ली दी जा रही है राजन की तरफ से। मिर्जा को सर जोड़ के खड़े हुए थे दोनों। इस दफा टीम वर्सा जो कि एक शॉट आई गेस एक अटेम्प्ट करेगी, और दूसरी साइड पे जो कि आई गेस सी पे होल्ड हो चुका है, और उनके पे बाय भी काफी टूटा फूटा है। और आई गेस 5 मैन ब्लेज यहाँ पे गराज में नुकसान पहुंचा सकते हैं, या खुद यहाँ पे अपनी टीम को नुकसान देते हैं, और ये बैठ गए हैं यहाँ पे वापस जाने का इरादा रखते हैं। और मिर्जा पिक सिक्योर करते हैं काफी अच्छा। द साइफर, द राउंड निकाल लिया जाता है, स्टन आता है, साइट ले ली जाती है। ग्लूटाइन जो कि ऊपर राफ्टर पे है, और पीछे से ओके इन्फो आ चुकी है। बटरफ्लाई यहाँ पे क्या एलिमिनेट होते हैं, बटरफ्लाई को यहाँ पे बॉल मिल जाती है, सारी टीम शॉट में आ जाती है, और पुकी को निकाल लिया जाता है। टेरर भी यहाँ पे ज्वाइन करते हैं ऊपर ओके फाइट हो चुकी है, उधर भी मिर्जा यहाँ पे एलिमिनेट करते हैं टेरर का, और यहाँ पे पकड़े जाते हैं जैन। इट्स 11-11, काफी अच्छा कम बैक वर्षा के साथ, बैक टू बैक जो राउंड लेना है, और एक राउंड दे के फिर वापस राउंड्स लेना। बहुत आला टीम वर्षा। टीम टीआरएच जो कि इस टाइम प्रेशर में नजर आएगी। हिसाब लग रहा है। फुल ओटी। और क्या ओटी, मैं तो कहूँगा स्किटर ये मैच ओटी पे जाना चाहिए। काफी धमाकेदार फाइट्स हमें मिलेंगी। बहुत अच्छा, जिसके लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड रहता हूँ और स्पेशल ऑब्जर्व करने आता हूँ सिर्फ इसीलिए कि हमें जो फाइट्स देखने को मिलेंगी। Honestly और speaking, they did the fanatic comeback, bro. They did the fanatic बिल्कुल comeback. यहाँ पे बटरफील्ड लॉन्ग पे इस दफा सी पे यहाँ पे आउटला चली है। ओके, स्टन दे दिया गया, टॉप गन अल्ट करते हैं और साइड छोड़ दी जाती है। यहाँ पे जैन गराज में डार्ट के लिए रेडी रहते हैं। 6 यहाँ पे रिवील नहीं होते हैं, जैन निकालते हैं 6 को, यहाँ पे ताबड़तोड़ और पीछे निकला जाता है। दूसरी साइड पे ए का कंट्रोल नहीं लिया गया, लेकिन राइसन जो कि बी के बाहर आ चुके हैं। यहाँ पे थोड़ा वर्षा का नुकसान पहुंचाया जाता है, उनका ड्यूलस ले लिया जाता है। यहाँ पे मिर्जा जो कि ए पे जाने के लिए रवाना है, और राइजन काफ़ी अच्छी पोजीशन पे जो कि गराज को होल्ड कर रहे हैं। बी को टॉप गन यहाँ पे स्लो हो चुके हैं, ए पे आ गया और रीटेक हो चुका है। और बी के बाहर यहाँ पे राइजन टेरर को लेते हैं और वापस निकलते हैं विद द टीम टॉप गन जो कि लॉन्ग पे जा चुके हैं। ब्लेज पे ओके, यहाँ पे टावर पे फायर दिए जाते हैं आई गेस ए पे फेक। और यहाँ पे पूकी काफी यहाँ पे अच्छे एडवांटेज, ओह पूकी पकड़े गए यहाँ पे। राइजन यहाँ पे ट्रेल करते हैं मिर्जे के साथ और मिर्जा पिक सिक्योर कर लेते हैं। यहाँ पे इन्फो निकाल ली गई है, 4v3 नाउ इन्फो मिल चुकी है कि 2 बंदे सिटी पे आ रहे हैं, एक अभी भी स्टिल ए आउटसाइड ए है। यहाँ पे जैन पिक निकालते हैं, ओके जैन पे अल्ट कर दी गई है बटरफ्लाई की तरफ से। 3v2 नाउ, जैन भी लो हैं, डैमेज्ड हैं। टॉप गन यहाँ पे गराज में करते हैं ज्वाइन। मिर्जा डैमेज दे जाते हैं, लेकिन ओके इट्स 2v2 नाउ गाइस। यहाँ पे एडवांटेज है आई गेस टीम वर्षा के पास फॉर द स्मोक। 1 वे कर सकते हैं टीआरएच, सॉरी जो बटरफ्लाई हैं वो लॉन्ग पे होल्ड कर रहे हैं। कभी क्लियर कराई गई है शॉट के लिए। ब्लेज काफी आगे फॉरवर्ड आ चुके हैं, स्टन दिया जाता है, इन्फो मिलती है। और ब्लेज यहाँ पे राउंड निकालते हैं काफी अच्छा पुश करके। यहाँ पे दोनों इनिशिएटर थोड़ा सा स्विफ्ट के बाद ये बनता था वैसे। स्विफ्ट के बाद ये बनता था। ब्लेज
That was a very bro misjudgment. Match point. चुप करे मौलाना मैं बोला ना तो नहीं और नहीं वो चैट भी देख रहा हूँ मैं साथ कास्टिंग ਨੂੰ ਗੱਲ नहीं करनी ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਮਾਮਾ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਦੇਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਹੋ ਜਾਣੀ ਅੱਛਾ ओके सारी वर्षा जान ले तैयार है बीट है सारी अग्रेसिव ओके यहाँ पे पिक निकाली जाती है यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे ट्रेल लेते हैं बटरफ्ली और 1v1 पिक निकाली सिक्स यहाँ पे जैन को एलिमिनेट करते हैं 4v3 अगेन और ग्लूटन जो बी होल्ड कर रहे हैं और बी का कंट्रोल लिया जा रहा है ब्लेज टावर से नीचे आ चुके हैं और पोकी स्टिल ऑन सी गराज क्लियर कर रहे हैं और मिर्जा अकेले यहाँ पे ग्लूटन स्पॉट करते हैं राइजन को और पुकी सी से आ रहे हैं और पुकी यहाँ पे कुछ कर सकते हैं अपनी टीम के लिए यहाँ पे बटरफ्ली एलिमिनेट होने वाले हैं पूकी वापस चले जाते हैं ओ हो थोड़ा इशू करते हैं और अपनी इन्फो भी देते थे फायर दे के ब्लेज जो कि बी पे आ चुके थे और इस दफा टीम वर्सा एसिड पुश कर चुकी है ए वो विद द स्लोली मूवमेंट विद द मट्ठी चाल बड़े प्यार दे नाल साइड ली जा रही है तो इतने ड्राइवर है मिर्जा फंस जाना है ओके मेरी ड्राइवर जो है सपोर्ट हो चुकी है और यहाँ पे साइड ले ली गई है और ऊपर ब्लेज आ चुके हैं टावर पोजीशन पे मिर्जा होल्ड कर रहे हैं उनको स्मोक आया है यहाँ पे ग्लूटन की तरफ से मिर्जा साइफर को निकाल लेते हैं यहाँ पे 2v4 और पोकी यहाँ पे पकड़े जाते हैं जिक्स काफी अच्छा राउंड लेते हैं अगेन और ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਓਟੀ ਹੋ ਗਿਆ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਮੌਲਾਨਾ ਜੇ ਤੂੰ ਚੈਟ ਜ ਨਾ ਆਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਓਟੀ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੋ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਪ ਦੱਤ ਪਾਣਾ ਉਹ ਗਸਕੇਟਰੋ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਓਟੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਟੀਮ ਵਰਸਾ ਨੇ बहुत कमाल थे टीम वर्सा ने मेरे ख्याल में बिल्कुल जो कि कमबैक जो कि डिजर्व करते हैं नो डाउट लेकिन दूसरी साइड पे टीआरएच ने भी काफी अच्छे फ्रैग जो स्टार्टिंग से निकालने शुरू किए थे उनकी भी बहुत यहाँ पे दात है 28 किल ब्लेस लेकिन काफी अच्छा जो कमबैक है हमेशा हार के जीतने वाली टीम का नाम बाजीगर लिखा जाता है और यहाँ पे अटैकर्स पे इस दफा पुकी ट्राई लेते हैं आगे की लेकिन पीछे जाते हैं कंट्रोल नहीं ले पाते दूसरी साइड पे ओके एसिड जिक्स यहाँ पे साइफर यानी कि ब्लेज को यहाँ पे एलिमिनेट करते हैं फ्लैश किया जाता है स्मोक देकर डॉज करते हैं टैकल निकल जाते हैं पीछे को और मिर्जान को ज्वाइन कर रहे हैं ए पे और यहाँ पे ए के लिए रमादान है टीआरएच और वर्षा आगे ही कंट्रोल लेके बैठी है ओके यहाँ पे गहरा तंग किया जा रहा है मिर्जा और एसिड जिक्स के लिए फायर दिए जा रहे हैं यहाँ पे ड्राइवर को इन्फो निकाली जा रही है यहाँ पे जिक्स पकड़े जाते हैं और पुकी भी निकाल लेते हैं और भाई यहाँ पे 4v3 होता है काफी अच्छे कंट्रोल पे थे बॉयज साइड दे बैठते हैं गंदा क्रॉस और यहाँ पे काफी अच्छे एडवांटेज भी उठाते हैं बटरफ्ली ऊपर आफ्टर को कंट्रोल ले रहे हैं मिर्जा यहाँ पे एलिमिनेट हो चुके हैं और टॉप गन एंड द अटैकिंग राउंड बटरफ्ली अकेले बचते हैं यहाँ पे 3v1 रिवील हो चुका है यहाँ पे स्प्रे दिया जाता है और यहाँ पे बटरफ्ली को भाग नहीं दिया जाता टावर पे ही लम्हा पा लिया जाए Switching sides. Match point. अब देखते हैं जिक्स और ऐसे कैसे यहाँ से कमबैक करते हैं अगेन कम बैक अगेन ओटी ओके इस दफ़ा सेकंड टाइम आउट ले लिया गया टीम टीआरएच की तरफ से जहाँ के बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी टीम वर्सा को लेकिन टीम वर्सा स्टिल इग्नोर कर रही है अपने एडवांटेज को बिल्कुल भी अपने स्टैट्स पे अपने पे आप पे बात नहीं कर रहे कि हम कहाँ पे गलतियाँ कर रहे हैं और इसी का एडवांटेज ले रही है टीम हाँ जी बहुत ही सख्त लौंडे हैं लेकिन कम बैक नो डाउट पर अभी जीते तो फिर एक टाइटल हासिल करते हैं ये
अदरवाइज तो सीन कुछ उल्टा ही चल रहा है यहाँ पे। टीम TRH बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं छोड़ना चाह रही। सात सेकंड है खत्म होने को और ये गेम पॉइंट भी हो सकता है और यहाँ से कम बैक भी हो सकता है। देखने को मिलेगी एक अच्छी फाइट। जो मेरे भाई स्ट्रीम पे आ चुका है लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सपोर्ट कीजिए टाइटल को और एंजॉय कीजिए दिस फाइट। ओके इस दफ़ा बी और कराज का कंट्रोल लेने की ट्राई की यार ये वर्षा की तरफ से। यहाँ पे टेरो थोड़ा सा डैमेज खाते हैं और पीछे हटते हैं। जिक्स रमादान और पूकी ओप के साथ गराज होल्ड है, लेकिन उनको पिक आई गेस नहीं मिलेगी क्योंकि टीम वर्षा फॉल बैक करती है फॉर द ए और ए का कंट्रोल छोड़ा नहीं गया अभी तक। ब्लेज स्टिल ए पे बैठे हैं ऊपर कैम के साथ, बिल्कुल फिल्म बना रहे हैं यहाँ पे। और दूसरी साइड पे जैन और ग्लूटाइन जो कि पीक होल्ड करके बैठे हैं टायर के गैराज के लिए बिल्कुल इन्फो छोड़ी बैठे हैं और रीटेक किया जा रहा है ए पे और ए पे टीम वर्षा भी पहुंच चुकी है। यहाँ पे ब्लेज यहाँ पे अपने ट्रैवार का एडवांटेज उठाएंगे लेकिन आई गेस टर्न दिया जाता है, पीछे हटा जाता है, यूटस डंप किए जाते हैं, राइजन दूसरी साइड पे पकड़े जाते हैं। टीम जैन सपोर्ट करते हैं और साथ ही उनके टेरर उनकी पकड़ लेते हैं। पेक राइजन का एलिमिनेट किया जाता है। एसिड मिर्जा विद ऑफ डाई और बी पे पुश किया जाता है। 3v5 नाउ काफ़ी गहरा तंग कर दिया गया और यहाँ पे ब्लू टैन अटेम्प्ट कर रहे हैं फाइट का लेकिन एसिड देख यहाँ पे वापस आते हैं गेम के अंदर और एक पिक निकाल लेते हैं। ब्लेज दूसरी साइड पे ट्रेड लिया जाता है। 3v2 नाउ एक ही साइड पे 3 बॉयज हैं और दूसरी साइड पे 2 सख्त लौंडे जो अगर निकल रहे हैं। एक और इधर ही वाले लड़के बड्डी बंदूक के साथ खड़े हैं और डैन जो कि गराज से निकलते हैं लेकिन ए साइड ले ली गई है। 10 seconds left. ओके यहाँ पे जिक्स जो कि टावर से नीचे उतरते हैं, एलिमिनेट करते हैं पुकी को और पीछे निकलते हैं। अल्ट के साथ बहुत आला टेरर को एलिमिनेट किया जाता है यहाँ पे, साथ ही जो फ्लिप किया जाता है और उसका एडवांटेज उठाते हैं जैन। और यहाँ पे बटरफ्लाई और गराज से पुश हो जाता है। जैन ऊपर आके रिवील करते हैं और काफ़ी अच्छी पोजीशन पे हैं। जिक्स यहाँ पे बैठ जाते हैं जैन। ओके फिर ओहो 1 HP जिक्स हैं और यहाँ पे जीतने और हारने के कगार पे आई गैस जिक्स एडवांटेज पे रहेंगे अगर पीक ना लें तो। बिल्कुल टाइम का पूरा यूटिलाइज किया जा रहा है, टाइम वेस्ट किया जा रहा है और ये राउंड टीम वर्षा के नाम होने को है। और ओके यहाँ पे इस करते हैं जिक्स और अगेन गेम को वापिस लेते हैं वर्षा के लिए। अगेन ओटी किया जाता है। बहुत आला प्ले बाय वर्षा, कम बैक करती है। दूसरी साइड पे भी बहुत आला अटेम्प्ट किया जाता है TRH की तरफ से लेकिन कंट्रोल खो दिया जाता है और यहाँ पे मामला थोड़े गड़बड़ा से जाते हैं। नहीं बोला ना, ये तेरे देखने वाला सीन है। इतनी हार्ड फाइट अभी तक पूरे टूर्नामेंट में मैंने नहीं देखी जो ये दोनों टीमें दिखा रही हैं। बहुत आला प्ले दिखा रही हैं यहाँ पे। इट्स नॉट अ वन साइडेड मैच, इट्स अ फाइट जो कि फाइट ली जा रही है। यहीं पे ये सपोर्ट प्लेयर जब थकते हैं और अकते हैं और रेज करते हैं और गेम प्ले दिखाते हैं, यही मोमेंट जो कि दर्शाया जाता है अच्छी टीम्स की तरफ से। कास्टर भी पुत्र आग फाड़ गया ऑन कास्टर दी भावे बोल के शुगर लो हो जाए। जिक्स जो कि बी विंडो होल्ड कर रहे हैं विद द वेंडल और ओके यहाँ पे उनको स्टन किया जाता है। ओके यहाँ पे जिक्स थोड़ी जल्दबाजी करते हैं और जैन उनको एलिमिनेट करते हैं। बी का कंट्रोल ले लिया गया और पूकी नो डाउट TRH की अटैकिंग उनके लिए बहुत भारी पड़ती है हर दफा और कंट्रोल लिया जाता है बी पे और 3v4 और यहाँ पे पूकी काफी अच्छा डैमेज खा जाते हैं, मरने के कगार पे और बटरफ्लाई अंदर जाते हैं लेकिन यहाँ पे ब्लू टाइम की तरफ से सपोर्ट किया जाता है और एलिमिनेट हो जाते हैं। जैन अर्ली हट कर देते हैं यहाँ पे। इट्स मिर्जा अकेले ही फीलिंग जो कि होल्ड किए बैठे थे, पिक निकालते हैं यहाँ पे। 1v3 ना ग्लूटाइन और दोनों काफ़ी अच्छे लो हैं, पीछे बचते हैं। ओके इन्फो थी बट यहाँ पे मिर्जा विप करते हैं और काफ़ी अच्छा पिक लेते हैं। ग्लूटाइन ये राउंड निकालते हैं अपनी टीम के लिए कुछ खास फ्रैग्स निकाल के। ओके जी अटैकर्स पे वर्षा अगेन मामला जो कि फिर वापस आते हैं, फिर लड़ाइयाँ लड़ी जाएंगी एक दफ़ा फिर। क्या कमबैक होगा? आज तो कमबैक देखने को आखिर मिल चुका है।
की ड्रॉ फुल धड़केदार और धमाकेदार मैच, काफी अच्छा ओवर टाइम जाते हुए दोनों टीमें एक दूसरे को बिल्कुल नहीं छोड़ रही। आज मैच एक अच्छे मैच का टर्न लेते हुए वॉक करते हुए, टेरर बहुत अच्छी पोजीशन पे है। यहाँ पे सिक्स पकड़े जाएंगे, नहीं, यहाँ पे पिक किया जाता है टेरर की तरफ से और काफी अच्छा पिक निकालते हैं जैन। यहाँ पे ब्लेज पिक निकालते हैं और इट्स अ 4v3 नाउ, और साथ ही मिर्जा ट्रेड निकालते हैं। ओके, शॉट अट किया जाता है, सिक्स यहाँ पे लो थे और जिक्स निकल जाते हैं। काफी अच्छा डाट दिया जाता है जैन यहाँ पे जिक्स को निकाल के टीम को थोड़ा डैमेज करते हैं। मिर्जा जो कि लो हैं, टॉप गन एक कार्नर में एक गलत पोजीशन पे और सपोर्ट किया जाता है। यहाँ पे पुकी विद द ऑप है, अटेम्प्ट किया जाता है, पुकी पकड़े जाते हैं। राइजन काफी अच्छा पिक निकालते हैं और यहाँ पे गराज में मूव कर जाते हैं। इन्फो आती है ग्लूटाइन को और साथ ही राइजन उनको सपोर्ट कर लेते हैं और थोड़ा सा बी पर पुश, और यहाँ पे पुश किया जाता है एक कल्ले बंदे पे गलत गाले वड्डी बंदूक लेके और स्टन दिता जाता है गराज दे विच और व्हील आंदा है, लेकिन उसे स्पैम दिता जाता है और यहाँ पे टीम वर्सा अगेन come back and the game begins. Switching sides. Continue. Overtime. It's a 14-14. Grenade. That's a big showdown. दोनों टीमें अपनी अटैकिंग के राउंड्स निकाल के जो वापस आती हैं गेम के अंदर, not gonna lie, they are very good fight. बहुत अच्छे स्ट्रैट के साथ दोनों टीमें बिल्कुल भी अपनी हिम्मत नहीं छोड़ रही। बहुत अच्छा फाइट। ऐस मोमेंट ते हुन जेडी मर्जी जिते ऐस टाइम तो बिल्कुल दोनों टीमें जो एंजॉय कर रहे हैं उनकी फाइट्स को, और इस दफा मैच ने जो मजा दिया है, अपने पैसे पूरे किए हैं इन दोनों टीमों ने। यहाँ पे जो तमाशाई जो मैच देखने बैठे हुए हैं उनके वाकई पैसे पूरे किए जा रहे हैं। और यहाँ पे फ्लैंक और ब्लेज वापस आना, ग्लूटन सपोर्ट करते हैं और यहाँ पे थ्रो कर दिया जाता है दो बॉयज की तरफ से। इट्स 3v4 नाउ। मिर्जा काफी अच्छी पोजीशन में बाहर निकलते हैं, मिर्जा यहाँ पे सपोर्ट करते हैं और यहाँ पे ट्रेड लेते हैं। ओके, यहाँ पे काफी अच्छे टाइम पे राइजन ज्वाइन करते हैं, बट यहाँ पे मामला खराब हो जाते हैं। और बटरफ्ली की इन्फो ऑलरेडी और द पुशिंग फॉर द सी साइड, बटरफ्ली वॉकिंग करते हैं, गराज करवा दवा है और टीम TRH इस दफा स्टैट अलग लगाया जाता है वर्षा की तरफ से, पर उनकी रीड बहुत बकार जाती है उनके लिए। ओके, बिल्कुल खामोशी छा चुकी है। टेरर यहाँ पे कभी में आ चुके हैं, बटरफ्ली जैन लॉन्ग पे आ चुके हैं। अल्ट है टेरर की और यहाँ पे स्लो पुश किया जाता है। ओके, एडवांटेज ले लिया जाता है और साथ ही राउंड अटैकर्स का एज यूजुअल जो टीम अटैक्स पे आती है वही राउंड ले जाती है। और अगेन इट्स 4-15। लेट्स सी क्या टीम वर्सा अगेन ओटी करती है। फाइनली टाइम आउट लिया जाता है टीम वर्सा की तरफ से फाइनली। और इसी चीज का एडवांटेज उठाते हुए कास्टर अपना कप फाड़ के पानी लेने चला है। प्रावा मुंह सो गई, जल्दी आई। आहो, मैं कौन सा नलके से पानी लेने आया हूँ। They finally understood that they want the overtime, bro. They want the time. My bad. लेकिन इस टाइम जो दोनों साइड के प्लेयर्स के पसीने और खास तौर पे जो IGL की हालत होगी, और नॉट गonna lie, the बहुत वर्षा का काफी IGL कौन है सप्रेस। वैसे? वर्षा की IGL आई गेस टॉप गन है और दूसरी साइड पे IGL TRH के मुझे खास नहीं पता आई गेस, बट मैं गेस कर सकता हूँ कि शायद ब्लेज हो सकते हैं। That is a wrong trip, by the way. लो जी, राउंड स्टार्ट होने लगा, 3 सेकंड रह गए ने और इस दफा सी थे अगेन पुश किया जाएगा। पोकी एंड टेरर जो कि कंट्रोल ले रहे हैं और बटरफ्ली यहाँ पे ड्रोन करके उनको पीछे करेंगे, लेकिन अभी ड्रोन नहीं किया जाता और वो पीछे हटते हैं। रिवील किया जाता है बी के लिए। ओके जी, तो यहाँ पे बी पे कंट्रोल लिया जाएगा इस दफा। टॉप गन एंड जिक्स काफ़ी अच्छा वॉक करते हैं और ग्लूटाइन जो कि काफ़ी अच्छी पोजीशन पे है और उनकी
जो कि इन्फो आई गेस अभी तक नहीं ले पाए ये लोग। और जो पीछे से इस दफ़ा ब्लेस काफ़ी अच्छे फ्लैंक पे आ चुके हैं और कोई ट्रैप वायर नहीं है। आई गेस ट्रैप वायर सपोर्ट होती है और ब्लेज वापस निकल जाते हैं। गराज का कंट्रोल ले लिया जाता है। लॉन्ग पे 2 बॉयज स्पॉट हो चुके हैं। पुकी जो कि गराज पे काफ़ी अच्छे पोजीशन पे हैं और यहाँ पे पुकी निकालते हैं। राइजन को वापस जाते हैं और टेरर स्पैम करते हैं लॉन्ग पे और यहाँ पे मिर्जा अपनी जान के हाथों तो बैठते हैं। ओहो टॉप गन यहाँ पे एडवांटेज उठाते हैं। टॉप गन की इन्फो नहीं थी और यहाँ पे ओमन को एलिमिनेट करते ही साथ ही नियॉन पोकी को ले जाता है। जिक्स गराज में है और लेट्स सी जिक्स क्या करते हैं यहाँ पे। जिक्स यहाँ पे जैन को खाते हैं। इट्स अ 2v1 नाउ। साइड छोड़ी जाती है और गराज में दोनों होल्ड कर रहे हैं और ब्लेज जो कि साइड स्पाइक पे आ चुके हैं और जिक्स जो कि स्टिल विंडो पे हैं टैप किया जाता है और ब्लेज यहाँ पे अर्ली पीक लेते हैं और एलिमिनेट करते हैं टॉप गन को और गराज से आते हैं और साथ ही टॉप गन एलिमिनेट करते हैं TRH ब्लेज को और इट्स 15-15 एंड द बिगिन अगेन W Otis। दोनों टीम्स के लिए अटैक बड़ा ब्लेस्ड जा रहा। Mir Obed brother, it's not Saraiki casting, it's Punjabi। मेरे ख्याल में ऑफेंसिव को आना चाहिए, वो उसे करनी चाहिए सर। या बिल्कुल यहाँ पे हमारे स्ट्राइकी ब्रदर अगर हमें ज्वाइन करते तो वो कर सकते हैं लेकिन आई गेस दैट गाय शाय बट ओके TRH सिक्स बाहर निकलते हैं। ब्लेज विंडो होल्ड करके बैठे हैं। गराज से दफा पुश नहीं किया जाता। ओके यहाँ पे ब्लेज पे पुश करता है। जिक्स यहाँ पे पीक निकाल लेता है और पुकी दूसरी साइड पे सपोर्ट करता है और उनको एलिमिनेट किया जाता है। सब 1-1 ट्रेड ले ली जाती है जैसा 4v4 हो जाता है यहाँ पे और इस दफा TRS जो कि ए पे जाने को तैयार है लेकिन दोनों टीमों के एक अच्छे प्लेयर्स एलिमिनेट होते हैं यहाँ पे यानी कि टॉप फ्रैगर 36 पे जिक्स हैं और 33 पे ब्लेज। दोनों काफ़ी अच्छे फ्रैग्स निकाल चुके हैं अपनी टीम्स के लिए। काफ़ी मायने रखते हैं ये फ्रैग्स और दूसरी साइड पे गहरा तंग किया जा रहा है ए पे और ए पे ही वापस आई गेस होल्ड किया जाता है। फ्लैंक देखा जाता है और शॉर्ट से जैन जो कि मूव कर रहे हैं स्लोली एंड टेरर जो कि लॉन्ग से पोकी के साथ ग्लूटाइन भी कॉर्नर क्लियर करते हुए और इस दफ़ा टीम ऑलरेडी वर्सा पहुंची हुई है। यहाँ पे क्या डिफेंड है ये इस दफ़ा ली जाएगी। लेट्स सी यहाँ पे बटरफ्लाई रिवील देते हैं। स्टन आ चुका है। यहाँ पे शॉट डाल दिया जाता है। पुकी डैमेज होते हैं। यहाँ पे टॉप में ऑलरेडी लो है और यहाँ पे पुकी ओके जी यहाँ पे 1v4 हो जाता है। काफ़ी अच्छी फाइट का अटैम्प्ट लिया जाता है लेकिन बहुत आला ट्रेड्स ली जाती हैं। पुकी काफ़ी अच्छा पीक निकालते हैं और पीछे भाई टॉप गन जो कि ऑलरेडी काफ़ी लो हैं। टॉप गन तेरा तो पुत्र कुछ नहीं बचना होने तैयार हो जा। TRH ने ओडिन मार के मोरियां कर देती हैं टीम वर्सा के अंदर। Switching sides. Match टीम point. वर्सा की एक बार फिर से धड़कन एज यूजुअल अटैकर हमेशा राउंड ले जाते हैं और लेट्स सी इस दफ़ा भी वर्सा क्या अगेन ओटी करती है। दोनों टीमें आज मैदान छोड़ने को तैयार नहीं है। दो में लीचड़ ने तो बहुत ही चीड़े ने असी अक गए हैं ऐ नहीं अक रहे वो ख़त्म करो। मजा आ रहा है भरावा। नहीं भाई मैं काफी एक्साइटेड था कि ओटी हो लेकिन इतना नहीं कि बस अब मेरी बस हो गई है। अगर बी पे पुश किया जा रहा है। ग्लूटन ऑलरेडी यहाँ पे रिवील दिया जाता है। स्मोक दिया जाता है। जिग सेंटर पहुंच जाते हैं लेकिन ग्लूटन को सपोर्ट नहीं करते और यहाँ पे पिक स्प्रे देते हैं काफी अच्छा लेकिन ग्लूटन पहुंच जाते हैं और डैमेज करते हैं टीम वर्सा को। और यहाँ पे मिर्जा भी आ चुके ज्वाइन कर चुके पूछिए पीछे राइजन जो कि अभी वेट कर रहे हैं फ्लैंक का लेकिन इस दफ़ा टीम में दोनों साइड्स में हैं ए लिंक एंड सी लिंक पर यहाँ पे एसिड पिक स्पॉट करते हैं और पिक निकाल लेते हैं और साथ ही मिर्जा भी पिक निकालते हैं। TRH भी जल्दी सॉरी बटरफ्लाई पिक निकाल लेते हैं। एक तो इनका नाम थोड़ा कंफ्यूज कर मुझे ऐसा 4v2 नाउ इट्स 3v2 नाउ। स्पैम किया जा रहा है बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्पैम के अंदर टॉप गन यहाँ पे राइजन को फ्लैंक करते हैं और यहाँ पे सपोर्ट करते हैं जैन को। ओके रिवील किया जाता है यहाँ पे इट्स 2v1 नाउ आई गेस। जिक्स यहाँ पे राउंड अगेन निकालेंगे टीम के लिए। राइजन ज्वाइन करते हैं जिक्स को और वेट किया जाता है काफी प्यारा जिक्स की तरफ से और अगेन अगेन अटैकर्स विन। बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे उबैद ये थोड़ा सा जो कंफ्यूजन है ना ये इनका TRH हटाना पड़ेगा नहीं तो कास्टर बेचारा फ्री च टंगया जाएगा। नहीं 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 बहुत अच्छी पोजीशन पे जा रहे हैं। बटरफ्लाई काफी अच्छे ट्रैक के साथ हैं यहाँ पे लेकिन जैन उनको डिफ कर रहे हैं।
सोवा वर्सेस सोवा और ब्रीच भी डिफ कर रहे हैं नो डाउट, लेकिन उधर से फ्रैग्स जो कि जिक्स काफ़ी अच्छे निकाल रहे हैं, ब्लेज 33 पे हैं और काफ़ी अच्छी फाइट। और लेट्स सी क्या इस दफ़ा भी टीआरएच अपना अटैक राउंड लेती है हर बार की तरह कि नहीं। हम तो इसी इंतज़ार में कोई तो अटैक साइड हारे। राइजन अकेले ए पे बी पूरा खाली छोड़ा जा रहा है, बटरफ्ली वापस आते हैं बी पे और क्लोज इन किया जा रहा है गराज का। बटरफ्ली जो है वो ड्रोन कर रहे हैं गराज के अंदर। ओहो क्रॉस कर गए हैं दोनों ड्रोन और इन्फो मिल चुकी है। तो बटरफ्ली डैमेज भी खाते हैं काफ़ी अच्छा और पीछे हट जाते हैं। टॉप गन जो कि बी का कंट्रोल लेंगे, बी खाली छोड़ा गया है और काफ़ी अच्छा एडवांटेज था इस दफ़ा टीआरएच का बी पे जाने के लिए, लेकिन आई गेस बी का ही अटेम्प्ट किया जाएगा। स्पाइक पीछे पड़ा है, ब्लेज जो कि स्पाइक के लिए वेट कर रहे हैं। ब्लेज अभी भी इस चक्कर में कि उनको फ्लैंक आएगा, बट नहीं, ब्लेज अब जाएंगे ए साइड में और बी साइड स्लोली पोस्ट हो चुकी है और कंट्रोल ले लिया गया। स्पाइक उठाते ग्लूटाइन और स्टिल वेट कर रहे हैं गराज का। आई गेस यहाँ पे फ्रैग्स का वेट किया जा रहा है, शायद फ्रैग्स कुछ मिल जाए अपनी टीम के लिए, लेकिन नहीं। उधर से टीम वर्सा वेट कर रही है। वर्सा भी सबर के साथ खेल रहे हैं। टॉप स्कोर करते हैं, आफ्टर शॉक दिया जाता है, ब्लेज 30 लॉन्ग पे seconds पकड़े left. जाते हैं, डैमेज खाते हैं, वापस आते हैं और यहाँ पे पूरा पूरा कंट्रोल आ चुका है बी का। यहाँ पे टॉप गन पुकी को पील देते हैं और दूसरी साइड पे मिर्जा एंड जिक्स जॉइन करते हैं जैन का पेज पोजीशन पे। गुड टाइम यहाँ पे पुकी को निकाल दिया जाता है वर्षा की तरफ से। यहाँ पे रिवील होते हैं लेकिन ट्रेंड नहीं निकाला जाता है। शॉट डाउट काफ़ी अच्छा दिया जाता है। यहाँ पे टेरर जो कि बिल्कुल लोडिंग के साथ अपना टेरर मचा रहे हैं। इट्स 3v4 एंड अगेन अटैकर्स सी अराउंड जीतने के क्लोज। One enemy remaining. जिक्स भी एलिमिनेट होते हैं। टीआर सॉरी बटरफ्ली जो है उनको बिल्कुल भी चांस नहीं देते और पीक निकाल लेते हैं। इट्स 1v3 नाउ। ग्लूटन काफ़ी अच्छी पोजीशन पे हैं और सैन भी बहुत आला ऑफ एंगल होल्ड करके बैठे हैं और वेट करते हैं मिराज के बाद और उनको पीक नहीं देना चाहते, किल नहीं देना चाहते और होल्ड कर लेते हैं फॉर द और जैन सपोर्ट होते हैं, पिक निकाला जाता है और यहाँ पे टीआरएच अटैक्स राउंड ले लेती है और अगेन बात आती है Switching वर्षा पे sides. ओटी होगा। Match point. दस पाब्लो शायद आपकी बात सच हो, लेकिन ये जो बड़ी बंदूक चल रही है ना पटे वाली 200 पे पटे वाली, ये वर्षा का बेड़ा गर्क करी जा रही है। और यहाँ पे टेक पोज लिया जाता है टॉप गन की तरफ से। आई गेस किसी लड़के को TRF has to do something on हाँ जी। defense, to be honest, if they want to close this match. Otherwise, it's going to continue. हाय थक गए हैं यार, आर की कॉल हो जाती है यार। यहाँ पे राउंड स्टार्ट It's होने अबे के वैसे आ रहे best of हैं। 3 है, ये वन चल रहा है। नहीं आई गेस PO1 है, यहाँ पे डिसाइड होगा कि कौन टीम यहाँ से निकलती है। पुश किया जाता है, स्पैम किया जाता है, ऐसे यहाँ पे पिक निकालते हैं काफ़ी फॉर भी वाइव और यहाँ पे दूसरी पिक निकाली जाती है 2v2 ना और टीम 2v2 करके बैठ जाती है और राइजन वापस आते हैं। ब्लेज भी इधर आ रहे हैं और क्या इनकी फाइट देखने को मिलेगी? नहीं, ब्लेज यहाँ पे वापस जाते हैं। ग्लूटेन जो कि गराज को होल्ड कर रहे हैं, स्पाइक उठा लिया गया राइजन की तरफ से। दोनों बॉयज काफ़ी लो हैं और यहाँ पे टोकन विंडो जाते हैं और ग्लूटन को पिक दे बैठते हैं। थोड़ी सी गलती यहाँ पे पुश किया, लेकिन राइजन गेम को वापस लेके आते हैं फॉर द लॉन्ग ब्लेज। यहाँ पे गराज से उनको पुश कर रहे हैं और स्लो वॉक एंड अगेन पुश। यहाँ पे पूरा वेट किया जा रहा है प्लांट का। लॉन्ग पे जाते हैं, केज देते हैं और यहाँ पे स्लो लॉन्ग की इन्फो दे देते हैं और यहाँ पे हेयर आती है, लेकिन लॉन्ग पे पूरा पुश कर लिया गया और स्लो वॉक ब्लेज की तरफ से जाते हुए राइजन पे। राइजन भी 10वां कंट्रोल लेके बैठे हुए हैं यहाँ पे दोनों आमने सामने और यहाँ पे ब्लेज पिक निकालते हैं राइजन की और ये मैच अपने इख्तिताम को पहुँचता है एक अच्छी फाइट के साथ। और जी वेल प्लेड की सदाएं लगती दोनों तरफ से। आहो मेरे गले दी होगी माँ पैनिक। Defenders win. I knew you फाइनली जान छुट्टी, कहानी मुक्की। आहो टीआरएच जीत गई ते वर्षा बढ़ गई। अल्लाह दे वाले सलाम अलैकुम। एक ही राउंड MFC बेस्ट ऑफ 1 थी ये। पता नहीं बेस्ट ऑफ 1 है कि BO3 है, लेकिन मेरे यहाँ ख्याल पे में बेस्ट ऑफ जिक्स 3 है। बहुत अच्छे फ्रैग के मार्जिन पे थे। 3-9 नो डाउट 10 फर्स्ट ब्लड बहुत बहुत आला ड्यूरस रहते हैं। जैन बहुत अच्छे इनिशिएटर जाते हैं, काफ़ी अच्छे फ्रैग रहते हैं। बाकी टीम टॉप गन जो कि बॉटम है
बेस्ट ऑफ 3 है भरावा काफी देखिए उन्हें बनांदा जट उस्ताद नवी बिल्कुल जी बिल्कुल 5 मिनट्स ब्रेक ओए होर है मैच ओ भाई मेरी गल सुनो कोई होर बंदा साध लो मेरी बस हो गई जे मैं जरा फिट होर के आया बाहरों चैट आफ्टर लिटिल ब्रेक हाँ 5 मिनट दी ब्रेक है
ओके जी, सेकंड मैच स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे और हमें ज्वाइन करते हैं यहाँ पे एसिड ऑफेंसिव वर्सेस किड्रो भाई। अस्सलाम वालेकुम बीरो। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। हाँ जी, आप दोनों कंटिन्यू करो, मैं जरा थोड़ी सी ब्रेक ले गया। ब्रेक लगी है क्या मतलब? रोटी छोटी खा ले। अच्छा जी, अगला जो हमारा मैप है वो है एसेंट। डिफेंडर साइड पे है हमारे टीआरएस के लड़के और अटैकर्स पे हैं एसिड वर्सा के लड़के। टीम कॉम्प जो है डबल इनिशिएटर जा रहे हैं टीआरएच के और डबल सेंटिनल डबल जा रहे हैं। सेंटिनल जो है वो जा रहे हैं अपने लड़के। हालांकि इट वाज अटैकिंग, लेकिन वो स्टिल जो है वर्सा के लड़के अपने डबल सेंटिनल जा रहे हैं। देखते हैं, अभी इन्होंने लॉक नहीं किया। आई थिंक तुझे दे क्या आर, लगता है इसकी तरह कैसा कॉम्प है मेरे वर्षा ख्याल का? से उनका वो तो ठीक है। वर्षा की बात ही करने लगा हूँ। वो मुझे जहाँ तक लग रहा है डिफेंड को ज्यादा टारगेट कर रहे हैं। वो कहते हैं भी अगर अटैक हमारा नहीं भी जाता तो नो इशू। आई और सॉर्ट ऑफ जो एसेंट है वो डिफेंडिंग मैप ही हर बंदा कहता है कि डिफेंडिंग मैप है, लेकिन अटैकिंग थी इनकी। चल मसला ये है कि अगर ये 2 सेंटिनल ले लेते हैं तो ये अगली टीम को मजबूर करेंगे मिड पुश लाजमी करने के लिए। लेट्स सी हाउ इट प्लेस। मैं तुझे स्पेक्टेट करने लगा हूँ, ठीक है? मैं तुझे ऑब्जर्व करूंगा उसकी तरह, जिस चीज़ को तू देखेगा। ओके ब्रो। इस टाइम साइफ केजे पे है अब वाइस पे है, सही है? नहीं, मेरा फिलहाल सोवा अब पे था। अभी मैं जिक्स को देख रहा हूँ। अच्छा जी, पहले राउंड का ये दोनों इनिशिएटर्स बी पे हैं। स्मोकर बी जा रहा है आई थिंक, एंड साइफर एंड विल इज प्लेइंग ए। और हमारे लड़कों का पहला एग्जीक्यूट जो है वो चल लग आई थिंक एक है। Gonna fall back here. ए पे महासंग युद्ध की तैयारी होने वाली थी। I pick the tier then. Okay. वेले ज़्यादा ही गुस्से में लग रही हैं। I think it's the time for Top Gun now. 30 seconds He has left. to perform well here. One enemy remaining. Awesome. Good round for Team Ruthless. Let's see if Versa can come back from it or not. कास्टर कौन वैसे खेल अपने रहे दोस्त हैं? कोई भी नहीं है। जट जड़ा से ना उस्ताद, वो यकीन कर रहे हो एक एक मिनट बोलना भी अब ये करने वाले हैं, मैं वो समझ करने सकता वाले हूँ, समझ सकता हूँ। हैं। मुझसे नहीं Both बोला। initiators are playing B and Don't miss me too much. सोवा के लिए अब तो मुश्किल होना ये वेले मिड पुश कर रही है आमन पे। Spike down B.
नाइस पिक बाय मिर्जा वेल इनको फ्लैंक है 2v Spike planted. Last player standing. नाइस ट्राई बाय सिल्वर अपना मैं जरा पूछ के आया स्पेक्टेट किसको कर रहा है This round will be very important for Versa now. They have to win this round. And let's see if Team Ruthless can convert it the bonus or Team Versa will dominate it with big guns. किसे spectate करना? Yes, this blood goes there. कर रहे हैं तुझे ही कर रहे हैं सारे हम हैं? तूने ही फाइट सिखानी है Let's go. तूने ही फाइट सिखानी है हम तुझे स्पेक्टेट कर रहे हैं मतलब तुझे फॉलो कर रहे हैं हम लोग Yeah. Stick basic Spike planted. टाइमिंग है अपने मिर्जा पे ओह नाइस शॉट ये Nice trade. One enemy remaining. Last player standing. Cooling down. Good kills by Ryzen, Nice. but Ryan converted it. अपना मिर्जा की जो पिक निकली है ना मेन वो थोड़ी सी गलत थी Suppressing. नहीं वो जैन की बहुत अच्छी वैसी लीड देखा गया था वो सेकंड गेस कर रहा था बट स्टिल टाइमिंग नहीं और फ्लिक दिया लड़के ने Really again mid push कर रही है with Oman and both initiators are playing B. Jet is trying to push B with Sova's wrong. good trade by Mithra. Let's see if they can convert it to a win or not. Yeah, Vice ult I think they should utilize it to secure this pawn. Nice. Enemy kill. One enemy remaining. Thrifty. Nice. I could not have made that easier. विक्स में वैसे क्या नाम है ऑपरेटर खेलना बहुत ज़्यादा पसंद करता है बट मोस्ट प्रोबेबली बिकॉज वो ओनली ड्यूल है इस वजह से उसने फिर मतलब विक्स चलो गन पे ही फोकस करते हैं See, never go operator in attack. उसको मिली वही करना है तो नहीं चेंज कर ली है उसने ले अपने टीटी लगा के आगे आ रही है पिक के लिए Oh, how you whipped that shot? Spike down B. नाइस शॉट विद Last player standing. One enemy remaining.
Spike planted. Adapt or die! Bad Nice, awareness dude. by He just Ryzen. he just teabagged him, bro. Yep. I think One of my cameras is broken. purpose पे नहीं था. Oh, wait. Okay. It's fine. What about this verification? Management ने tech pause लिया. Need a drop. Thank you. Shutting them down. One suppressed. Grenade. Flash. Nowhere to run!
can you spectate attack? Yep, my bad, sorry. I was on down. उन्होंने बहुत जल्दी ये राउंड छोड़ा है ए में प्रॉपर रीड है अगलों पे बहुत अच्छी रीड है ओमन वापस चला गया अपना ए साइड पे एंड केओस प्लेइंग केओ फ्लैंक दे रहा है इन्हें सफर्स होल्डिंग सीटी फ्रॉम डी Okay, no one's watching your flank, guys. Wake up, wake up, wake up. You should run. They have to Buying respect time now. with their ult. Yep, they have to respect it. Glow पे ult है, I think उसको थोड़ा सा aggressive खेल लेना चाहिए round. Last player standing. One enemy remaining. Nice shot by Mirza. Skidro, I'm lagging bro. मेरे net जो है ना वो थोड़ा ping high हो गई है तो Thanks. मैं जो है ना जितना observe हो पा रहा है जैसे उतना ही मैं कर सकता हूँ. Okay, bro. I think आपको dead का पूछना चाहिए. Come here. Let me ask him. What's this? ओके Placing जी swarm grenade. Swarm grenade out. यहाँ पे ए सी Placing swarm grenade. वर्षा जो है कि ए साइड ले चुकी है और टॉप पे Blinding crack. बैठे हैं एज 4v3 होके टीम TRH with the half buy. You had your fun. My turn. इस मिर्जा यहाँ पे अपनी अल्ट पे खेलेंगे फ्लैग बचाएंगे अर्श वापस निकलते हैं वहाँ से डैश करके और टायर यहाँ पे पिक निकालते हैं अगेन फ्लैश काफ़ी अच्छा दिया जाता है बटरफ्लाई की तरफ से और उनको पीछे दिखेला जाता है एक दफ़ा टॉप गन यहाँ पे निकालते हैं लेकिन अर्श यहाँ पे साथ अर्श काफ़ी अच्छे शॉट्स ले रहे हैं यहाँ पे और वर्षा की इकनॉमी भी काफ़ी ख़राब की गई है यहाँ पे राउंड तो जाता है वर्षा को लेकिन वर्षा यहाँ पे अपनी इकनॉमी खोती है Gonna fall back here.
One enemy remaining. Nice pick. Oh bhai sahab. Oh bhai sahab. Absolutely demolished. Blaze is blazing, bro. Yeah, bro. Ching almost start है. Continue करो. पिछले मैच में कास्टिंग सुनी थी हमारी ब्रो यकीन कर वाकई सख्त लौंडे बने हुए थे एसिड इस बार पिघल गए लौंडे पहले ही टाइम आउट ले लिया and the TRH then has also disconnected and reconnected. Back in a flash. I have the spike. To create fake swag. Die. Revealing area. One enemy remaining. Spike down mid. Last round before the switch. Load up. We're not coming back. That goes there. Now we wait. Last round for the attackers. Let's see what they're gonna cook this time. They have a very defensive heavy comb, so let's see Get out how of my they're way. gonna do defense. Do great picks, Wazix. And he wants Nowhere to go for to more. run! You should run. One enemy remaining. Flawless. I cannot use that. Or die! Great round by Team Versa. Switching Let's see how sides. the other half will go now. Need a drop. Team Versa is highly focused on A main and they were playing Doing a defense. thing.
Right here. It's a 3v2 now. They perfectly got the picks. Spike planted. Last player standing. And the revenge has been taken for the knife from the last match. Pardon me guys, I'm not a caster, I'm just a regular friend of the caster, that's why. You have to bear with this boring casting. किधरो Hmm? आई थिंक इनको फ्री साइट नहीं देनी चाहिए, कॉन्टेस्ट करना चाहिए। केजे को कोर्ट हाउस नहीं जाना चाहिए था, उसको लैन खेलना चाहिए था, जितना जो मेरी ऑब्जर्वेशन। मैं भी यही सोच रहा था कि ये कम से कम साइड को होल्ड करेंगे, बट नहीं, they try to hold mid. Last player standing. Spike down A. A good comeback party message. Down here. Let's see if they can maintain the pace or not. Alarm bot out. Placing swarm grenade. Turret out. Bot coming back. Need a drop. द अमाउंट ऑफ डिसरिस्पेक्ट ब्रो, हमें एकदम से नीचे फेंका है इन्होंने कास्टर बीच में, देख रहा है इसके ब्रो। I was just want to know what's cooking. पॉज लिया था क्योंकि टी बैग और बॉडी शूट का सीन चल रहा था आफ्टर किलिंग समन, तो उसके लिए वार्निंग दी है कि फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग है टीआरएच को कि ये चीज़ ना करें, ये अलाउड नहीं है। तो
I guess ये तो यही बात है। internationally भी बैन होता है ना? ये और रोका हुआ है टूर्नामेंट की हर टीम को रोका हुआ है कि ये सीन नहीं करना, ट्रैश टॉक या अपना टी बैग वगैरह। और ये होना भी नहीं चाहिए, चाहे कोई भी टीम है। But the bullying is still going on in chat. Premium spanking, the fuck is going on in this chat? Yep. Revealing area. मैच निकलता है, डिफेंडिंग साइड मैप है। नाइस शॉट बाय राइजन। राइजन को एक दिख के वापस रिपोजिशन कर लेना चाहिए। Last player standing. नाइस शॉट। Spike down A. Ali Oman left. Well played by Acid Varsha. नौ 6 चल रहा है, TRH के 9 राउंड्स हैं और एसिड वर्सा के 6 राउंड्स हैं। ब्लेज भाई इस टाइम टॉप पे बैठे हैं विद 15 किल्स द होल मैच। वर्सा में मिर्जा साहब 12 किल के साथ। अभी बी होने लगा है, साइफर ए पे चला गया है TRH की तरफ से। Let's see if Cypher जेट can और take- वाइस ने ए मेन का कंट्रोल ले लिया, उनको इन्फो है कि भाई ए क्लियर है। एंड साइफर इज प्लेइंग मिड। आई थिंक इनको हो जानी चाहिए इस चीज पे। वेले ऑलरेडी इनसाइड। Spike planted. 3v3 situation. whiff of One enemy remaining. a heavy troll by Zan and Arch. आई थिंक जिस साइड पे वर्सा वाइस को खिला रही है ना, उधर उनको हैवी नहीं रखना चाहिए। जहाँ पे केजे खेल रही है वहाँ उनको हैवी रखना चाहिए, क्योंकि उन्होंने केजे को ही बार बार उन्हें टेस्ट करना है। लेकिन ये बिल्कुल ही अपोजिट कर रहे हैं। ये लोग केजे को साइड से बाहर खिला रहे हैं, बी कॉन्टेस्ट के बगैर उनको दे रहे हैं। हालांकि इनको बी हैवी रखना चाहिए। Scanning ahead. अगेन दे आर पुशिंग बी। Taken out. And they took the flank and they got the side. Not ready yet. It has to be a retake again, but a 3v5. ओमन ने Spike planted. Last player standing. Last player standing. Not bad. Decentralize his ult. Just for the sake of kill, bro. Miza, what the fuck you doing, man? हालांकि डिफेंसिव स्टैट्स बनाई हुई हैं एसेंट की पर्सन है। अच्छा स्किदरो, तूने ये चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि मोस्ट ऑफ द जो प्रोफेशनल टीम्स है ना, वो एसेंट को बैन रखते हैं कि एसेंट नहीं खेलना। हमने नोटिस किया
हाँ pretty common हो जाता है ना, majority teams की stats होती हैं यहाँ पर, और वो हाँ भी multiple और और काफी कहते हैं heavy। हाँ और आई थिंक वन साइडेड भी हो जाता है एस एंड मैच, लेकिन इधर तो बिल्कुल ही उल्टा हो गया ना। वेल ऑलरेडी इनसाइड। नाइस शॉट पे राइजन। Good kills there। Last player standing. Nice kills बटर Brazil। फ्लिपिंग शॉटगन लेके जो बड़ा है ना हेल में ब्रो। मैं तो सेकंड नहीं किया उसको, मैं अभी कर रहा था उसको तो, पर लेकिन मेरे आने से पहले ही he had already took 2 Remember, lives your bro। weapon is only a tool. You can't just shoot. You have to think. Let's see if Acid Versa can come back from this again or not। They have proven स्टिल विनेबल है, लेकिन अब थोड़ी सी समझ भी लगी है इन्हें कि 3 बंदे ये लोग बी खिला रहे हैं। Back in a flash. जैसे ए ने इनका कंट्रोल लेने लगी है। ओके साइफर इज पुशिंग ए। I know exactly। यही छोटी छोटी गलतियां जो ये लोग कर रहे हैं। ठीक है, सिचुएशन है स्टिल विनेबल है। One enemy remaining. नाइस। नाइस शॉट बाय राइजन। Attack when they're suppressed. I cut their options. राउंड निकल चुका था अपना इनके आगे, अगर उनका इको ना होता तो। ओके थोड़ा सा चेंज देखने को मिला है, वाइस खेलने लगी है इस टाइम बी पे। अच्छी रीड है कि हाँ भाई अपना बी ही ये लोग पुश कर रहे हैं हर राउंड में मोस्टली। अगर उधर साइफर पिक ना निकालते तो वो लोग बी ही जाते हैं। मुझे नींद आ रही है यार, हीर लेवल की। 3-4 more rounds bro। But if Acid Versa wins, then it's gonna be a third बचे map। बचे। नहीं कुछ नहीं। जट सब आ जाओ यार, जट सब तड़ी कास्टिंग ही बेस्ट है, हम तो यहाँ पे बोरिंग कास्टर बैठे हैं, कमेंट कर रहे हैं आ जाके छोटी छोटी बातों पे। यार मैं तो जबरदस्ती का कास्टर आज प्लांट हुआ हूँ ना। सेम यार ब्रो, सेम यार। मैं इंट्रोवर्ट पर्सन हूँ जो वैसे कम बोलता है, और मैं कास्टिंग बेसिकली वी करता आर नॉट कास्टर, वी आर जस्ट ऑब्जर्वर्स। हूँ। Yep, we are observers with voice। अब वाइस को आई थिंक के साइट में नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि शी हैव अर्ल्ड दे कैन यूज इट फॉर द रीटेक। किसी और को इधर खिलाना चाहिए जहाँ पे वाइस खेल रही है। बट चल But they're pushing mid early, let's see how it will play out। My ultimate is ready. नाइस पिक बेसिक ब्रो। Don't miss देखा पिक निकली है वाइस की, नहीं निकली। Gun here. One enemy Bro, remaining. bro, hello. Last player standing. Here is 1 HP. Take flight। Defuse the spike। Nice. Blind shot। nice. It was a मैं blind इसे shot। लकी शॉट कहूँगा। It was not He went meant to blind hit as him, well। bro. Clutch।
और जैसे कि किधर मैंने Never कॉल दी give up. थी कि इस जगह पे वाइस को नहीं खेलना, Scanning ये ahead. देखा उधर ही उसकी निकली है, पिक निकली है। Yep, that was a और good. जब केजे अल्ट करने लगी है, लेन क्यों नहीं होल्ड कर, आई डोंट नो व्हाई, व्हाट द फक इज गाइस डूइंग। But और the सीधे thing अगर is, साइड पे हम लोग टीआरएच को देखें तो बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड, और मतलब पता लग रहा है कि हाँ भाई ये वो चीज को फॉलो वो किया जा मिड रहा राउंड अपनी स्टैट चेंज कर लेते हैं। अगर उनके बंदे मर जाएं वो मिड राउंड स्टैट चेंज कर लेते हैं फिर। है। वाह, दोनों Doing a thing. क्यों खिला रहे हैं इधर। Good pick by नाइस Ryzen. पिक बाय राइजन। Good pick by Ziggs. Go on my mark. Careful. नो वन इज पुशिंग देम, व्हाई? ओके, मुझे था कि व्हाई से अर्ली यूटिलाइज करने लगी है फॉर नो रीजन। Spike down mid. ओके, ओमन ने स्पाइक उठा ली है, केओ एंड ओमन रिट्रीट हो रहे हैं बी मेन पे। One enemy remaining. Flawless. वेल प्लेड केजे, नाइस ट्राई बाय टीआरएच। कमबैक लग रहा है होपफुली। यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि मेरे पास बटन्स मौजूद हो जिसपे मैं डायरेक्ट किसी किसी पर्सन पे शिफ्ट करना चाहूँ। एसिड वर्सा मेरे लिए टीआरएच भी रिस्पेक्टेबल है बिकॉज ऑफ ब्लेज, बट स्टिल जो है मैं ब्लेज भाई सॉरी हैं, मेरे दोस्त खेल लें मैं तो उनको सपोर्ट करूंगा यार। ऑफेंसिव? यप यप। ऐसा नहीं हो सकता कि लाइक मैं नंबर पैड से अगर किसी बंदे का नंबर दबाऊं तो मैं उस पे शिफ्ट हो जाऊं? हाँ हो सकता है। ओके हार्ड ये कर रहे हैं लड़के। Right here. ये सोवा ने मिस किया है, ओ भाई साहब। Initiated. Spike planted. वाइस की भी अल्ट है, लेकिन इनको कर देनी चाहिए। तीनों बाहर खेल रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि वाइस की अल्ट है। Last player standing. One enemy remaining. ये राउंड कैसे दे दिया है लड़को, नाइस ट्राई वेल प्लेड बट हियर ब्रो। Match point. The thing is केजे bro की they उन्होंने अट cannot लगाई है smoke. तो उन्होंने नहीं किधर में बात लास्ट राउंड में देखो, केजे की अगली उन्होंने अट लगाई है टू पुश देम आउट, ठीक है ये लोग बाहर चले गए हैं तो ऑब्वियस है वाइस की आप अट लगा रही हो, उनको तो नहीं उसने टच करना है, वो तो ऑलरेडी बाहर है, वो यूज करनी चाहिए थी बस स्टिल। अब जब से उनको 2-3 राउंड से इन्फो मिली है कि हाँ अभी बी पे 2 सेंटेंस खेल रहे हैं, दे आर पुशिंग ए। Revealing area. I think it's GG. Yeah, Looks like a rat. Last player standing. Spike planted. well played. Attackers win. दोनों टीम्स बहुत ही अच्छा खेली हैं लेकिन एज कंपेयर टू एसिड वर्सा आई थिंक टीआरएच जो है वो ज्यादा ही ऑर्गेनाइज थी ब्रो, विद देयर स्ट्रैट्स Their एंड stats are एवरीथिंग। good. हाँ, और उन्होंने जब देखा है कि एक दो राउंड्स के हाँ भी 2 सेंट में बी खेल रहे हैं तो उन्होंने लिटरली ए उन्होंने हार्ड करना शुरू किया, और इस चीज़ को इन लोगों ने फिक नहीं किया कि हाँ भी अब उनको इन्फो है तो उन सेंटिनल्स को दोबारा सेपरेट कर देना चाहिए दूसरी साइड पे। अगर 2 सेंटिनल्स बी पे खेल रहे हैं तो फिर ए हैवी खेल लो। अच्छा Anyways, bro, that was a good map, and best of luck for Team Ruthless for upper finals. और हमारी बोरिंग कास्टिंग सुनने के लिए माजरत।
चलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम आपको प्रॉपर कास्टर्स ही होस्ट करें. ठीक है ब्रो, आई एम लीविंग द कास्टिंग.